good. दूसरी चार्ट लेंगे, तीन चार्ट आनी चाहिए। इसको करना माउस के साथ कर लो। ये इसको दोबारा ऑफ करते हैं। हाँ, ये करके रखो। हाँ जी, वन सेकंड। इसको साइड पे लगा लो। ये हाँ, इसको अभी आपको ये होगा क्लियर। ये तीनों चार्ट चाहिए। आपको हाँ जी, ये आपको कनेक्शन आपका सिमुलेशन 10 मिनट का है। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, Vajan. Areas are updated, basis of pressure is up. ग्रीन आना चाहिए। Strike becomes 18,290. सर वो सिमुलेशन पे ऑन कर तो रेड डॉट आ रहा है। अभी फिर कनेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ, तो नीचे ग्रीन होना चाहिए कनेक्टेड। सिमुलेटेड डेटा फीड नहीं, खाली सिमुलेशन। या सिमुलेशन दिखाएं मुझे। हाँ हाँ, तो इस पे डिस्कनेक्ट करें। ये देखें डिस्कनेक्ट लिखा है, दोबारा कनेक्ट करें। तो जब इसका अगर इस तरह कभी आ जाए तो डिस्कनेक्ट एंड नीचे वाला आ गया जी। $18,290. News Forex Factory. We have flash and flash. $18,623. $18,972. और सर नहीं हाई टू गो लो। मैं हाँ, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ट्रम्प से
काफी यही कर सकते हैं। All right, good morning, everybody. Wednesday, April 23rd, 9:01 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you guys are joining us at superareas.com. Welcome in person as well as online. Crazy market last night. The moment it opened at 6 p.m., Trump was sitting in Oval Office and he decided to say, I'm not going to fire the Fed guy. So, yeah. Powell. So based on that, the market opened crazy high with a huge gap last night for Nasdaq, ES, everything else. So will that get filled? I'm not sure, but let's see. So high to go low, I think. Let's look at some numbers right now. Nasdaq went as high as 18,972. ES went as high as 18,623. So that's our Nasdaq range. And we have ES all the way up 54, 56 right now. So it is opening above R1. It's opening above R1. Things are looking, the base is up, pressure is up. So high to go low. So expected high, we may short there. So 100 points from expected high. And whereas R2, 78, so very close to R2 soon. So 20 points or so to R2. So it is above R1, below R2, I believe 960. So we are inside R1 for your, what do you call it? Nasdaq is inside R1 right now. Above R1, very close to R1. So, and it is heading to R2 soon. So R2 19,060. Yeah. So both markets are, where is Dow has gone to, so everything is above R1 right now. And crazy swing that came up. Let's see how far they pull this up. And let's look at Forex Factory. We have news at what time Waller's going to speak. Medium impact, 9:35 speeches, but really important from 9:45 to 10 o'clock. We have new home sales, flash PMI. So things with Trump couldn't change any time, any second. So speeches. हाँ स्पीचेस का इम्पैक्ट लो है या मीडियम है लेकिन स्टेटमेंट नहीं है so that's how. So what is the ES highs and lows? We got almost 30 54 56. It's coming from as high right now, and so R1 is done for Nasdaq, and don't take R1 if you have not taken it. Now it's done. Low 53.77. Let's see. The high to go low is the plan for today. Every single thing is on sale. Apex is on sale, 90%. Bullnox is on sale, 91%. Perdia is on sale. Legends is no longer on sale, back to 70%. What else? These two. Take profit, of course, as your... R1 is done for both. Sorry? No, R1 to ho gaya, for गिर गई जी market.
So R1 is done for officially for Nasdaq. So we had 1,200 points rally up. ES is coming down. So we'll worry about it around R2. Let's see how it goes. Gold is nowhere near to be found, so we won't go worry about gold. कॉस्को के साथ हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसमें दो एग्जिट बात है ओके उसी कॉस्को पे जाता हूँ हाँ उसको आपका सेल लगेगा या एटीएम के साथ लगाएं या ऑर्डर के बाद. All right, market is coming, tumbling down from 1972. R1, 72 points has fallen. ये सेल तो ऊपर लगेगा ना आपके मिड बैंड पे. सेल लगाया हुआ तो वो पिक हुआ है पर उसके पीएनएल में नहीं सेल, लेकिन जब तक ऑर्डर पिक नहीं होगा ना एग्जीक्यूट, क्योंकि ऑर्डर को पिक होगा तो पीएनएल शुरू होगा, खाली लिमिट ऑर्डर पे नहीं आता. All right, let's see what happens today, because the last night Feds kind of दो तो रेड है दो ऑरेंज है. तो नाउ आपको ऑर्डर पिक हुआ होगा अगर आपने मिड बैंड पे लगाया था और वो नीचे आया थोड़ा सा. गुड मॉर्निंग.
ये speeches हैं, they won't have an effect so much as its statement is really to worry about when they, yeah, हाँ उसमें आएगा, उसमें, yeah. So we want it to green to go up, so the market, because manufacturing, but we'll see how it goes. Currency के लिए बढ़िया है, market के लिए मारा। Second is also good for currency. Yes. 18,907 minus 19,010. That's 103 divided by 7. Let's do 14 points from here. 5,442 plus 14. Good morning, Ji. So we, the left-hand side at 320 is bearish, but you know the So we don't take a 15, trade. 10, then we don't take any. We don't take any trades. Is it possible odds of success at like bullish when can we order, like you know place order, like you know third हाँ, candle. नहीं, आपने वो वीडियो देखी मेरी uh, बिगिनर्स गाइड निंजा ट्रेडर, तो वो मस्त थी ना देखने, आपने चले आज देखें, लेकिन ग्रीन हो तो मिड बैंड पे बाई करें दोनों, रेड है तो बाई लिमिट लगाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो अभी आप सेल की लिमिट लगाएंगे जब दोनों रेड होंगे। यही फायदा है डिस्कशन
इंसान को पता चल जाता है कि ये सही है या गलत। Same new home sales with the same commission. उसका नंबर ऑफ यूनिट सिंबल नंबर Last one, 676 reports. Report something. got it. Thank you. यही फायदा है। हाँ जी, Can I place a buy on the card right now? Yeah, so 5-4, correct. Both are green, Green. you're buying. Both are red, you're selling. Order filled. Bank, you know. What wrong with you? So one side make 2 points here. So you know this one 0.25, 0.50, 0.75, 1, 2, 3. Then I can sell it. Yeah. But it has to pick up first. It didn't, up. yeah. Pick up. So do we have to write it down when we place the order, the number? No, because it keep changes. So you have to keep moving because the number, as the price goes up and your mid band is moving too, right? So let's say you put it at 44 and in about a minute, the price gone up. So you will go to 45. Oh, So oh. So pre-market yesterday was Tesla's earnings. So let's see. They're not good, but stock still went up because he's going to step down from Doge, all that nonsense, right? Now it's So go up. so now it's going to go up because already pre-market stock is up $18 pre-market. So all stock, because market is already open, everything is green. So because yesterday again at 5:30, Trump says, I'm not going to fight with feds, just if you want to lower. That one statement, market shot up 100 points from 5:30 to 6 because everybody says now we are going back up. So then I looked at my area. I said, kahan par hai area? It shot up to our extreme high to the dot. I shorted it. I got out. So I'm done from already last night, but because the day counts from all my funded accounts at 6 p.m., keep an eye on your areas. Keep an eye because keep a habit because evening and the morning areas, they come for you. Meaning every time you log in, you have a number to keep in mind. You can download the free apps on your phone. Beginner, like Trading View, it's free app. For those who are offended, they can download TradeAway, they can download Rhythmic for live data. Because these areas help you so much. Because I was no trade in the morning. Last night, price at 605 came to extreme high. And then I shorted and I got out, right? So, Nasdaq, yes, दोनों गई. Nasdaq गई expected high, ES गई extreme high. और कल के जो areas थे वो थे 17 से 30. ठीक है? बैठे रहे, कुछ भी नहीं आया. Exactly 6 o'clock हमने देखा कि मार्केट खुल के क्या होता है ना, एक होता है ना कि मार्केट खुलेगी, वो एक्सट्रीम हाई पे बैठी हुई थी, हमने ऑन किया, शॉर्ट कर दिया, 50 accounts shorted together, and then all we needed like 2-3 माइक्रो से अब हमारी रेशियोज लगी होती हैं. एपेक्स का ग्रुप है, उसमें इतने डालने हैं, लेजेंड का ग्रुप है, वो ग्रुप्स बने हुए हैं. And then we shorted, and I posted on my status, I shorted different from 54.9, I think, or 5. And I got out at 53.98 something. So about 10-15 points and done for the day. छोटे अकाउंट में $150, बड़े अकाउंट में $250-300. That's it. So again, this is what I'm waiting for
price to go to R2 at least. So that's the plan right now too. Hey? That happened last night at 6 p.m., right? So it's not something you can it's just, I know I've scanned my areas, कि कहाँ price, जब मैं यहाँ से उठ गया था, I'm like, where's the price right now? And then, but precisely it hit our area for both ES and Nasdaq. So now everything looks green. So let's see, maybe we'll get to expected high. Let's see. We go with the trend. Goes up, we buy. Goes down, we sell. Order filled. So your order should be at 5447, the mid-band order. Yes. And if it goes up, just move your order up. That's what I'm keeping. Yeah, That's that's because we gotta chase the yeah, mid-band. Right? we- Yes. But I have put in like around 7 orders. No, you have to not individually, just move that order. Problem is, look at where the white line is. White line is at 54.53. Computer is saying buy at 54.47. So until that orders are not costing you anything in a commission to until it gets picked up, then your trade starts. I'm not able to place an order from the chart. I'm able to place the order from ROM,
Okay. From the chart, it takes a lot of time and. No, it's much faster. First, you have to make sure. Did you watch the video? Yesterday I was not. Okay, so this tells you how to turn on. Yeah, have to this turn one on- I know. yeah. How to turn. Oh, yeah. Let's see. Demo account I mean. Doesn't matter. Which Okay. Although I'm making One money. more. one. आपका तो ऑर्डर पिक हुआ हुआ है. Oh, हाँ जी, बोलिए. हाँ जी. मेरे बीच में indicators नहीं आ रहे. ठीक है, वो 11 o'clock 10 के बाद ना आप डैनियल को देखिएगा. आ रहे हैं. हाँ, वो शायद उन्होंने इनेबल नहीं किया हो गलती से, तो वो कर देंगे. All right, he's gonna start his brief soon. All right. Good morning, guys. जी, good morning. Assalamu alaikum. Namaskar. Sat Shri Akal. Hello, guys. Game show. जी, अस्सलाम वालेकुम, sir. Hikesh ji, good morning. Vikas Alpaji, good morning. Harleen, good morning. Taimur Bhai Shindar ji, good morning. Sunil Ali, good morning. Walaikum salam, Ali. Majid, good morning. Manpreet ji, good morning. जी अनिल अंबाट अयाज भाई प्राग जगदीप जी जैन जी गुड मॉर्निंग समीर गुड मॉर्निंग शाजी गुड मॉर्निंग क्लिफर्ड सैयद अली जी अश्वन जी गुड मॉर्निंग परेश गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी quick review for our disclaimer, guys. All material and posting on our web service or our training floor not intended as trading advice. They're just meant to enhance your trading decision, but not make it for you. And we take no responsibility for any profit or loss. You're solely responsible for all your actions. And don't think you made money yesterday, you'll make it today. Always be on your toes, always place your stops, and always ready to accept those losses. And do what you see, don't do what you think, and treat this market the very first day you treat. And all the areas we have on our superareas.com or on the graphs of not buy and sell offer or buy and sell areas. These are just for information and educational purposes only, and we take no responsibility for any action taken by any subscriber. Today, S&P 500, excuse me, our S&P 500, our base is up, pressure is up, a very strong push, 329.50 push to the upside from swing low. It was getting very close to our 240 lower band, and we got the good news, the Trump back up from the Fed. He was pushing Paul to resign, and from his remember, nobody can win from Feds. Even it was predicted, and even we knew that either Trump will be got fired, or they will just I don't know, wipe him out or something happen. But right now, base is up, pressure is up. The best is low to go up, or just stay high. Just stay up, agreement band to go up. R2 is expected. If you look at the Nasdaq, 1,282, almost 83 points pushed to the upside, 127 on Russell, 2,162 on our Dow. 9:45 we have flash manufacturing PMI is coming, service PMI is coming, new home sales is coming at 10 o'clock, 10:30 we have crude oil inventories. Beige book is coming. That's today. It will be very important because they will tell us
what's going on. They will be hawkish on the goods or currencies, and it will move the market today. But overall, remember this price. If you remember a few days back, I told you the long-term S&P 500, I'm expecting a push to the upside, and this is what price has to bounce back up. That was 57 something, and price is now heading towards our 57.40, 57.50 area, and that's our weekly mid-band. Right now, opening above the mid-range, very close to our R1 area daily and R2 area, the areas I give it to you. So the best is low to go up would be a good strategy, and high to go low would be a good strategy as well. And our upper band on 240 chart is valid. So upper band is setting somewhere 55.80 to 56 area, 55.80 to 56 area. But somewhere 50, our expected high will act as a very, very strong resistance, 55.50 area. If you see 55.50, 60.70, this is our S&P area. And Nasdaq, same thing, our somewhere 400, 19,400 will be acting as very strong resistance area. So far, 330 points pushed to the upside, no retracement, but we are in a diversion. Remember, S&P, Nasdaq, Russell, Dow, all are in diversion to the downside. So when we talk about diversion, the price is at high, so diversion to the downside. The price is at low, diversion to the upside. So it hit our expected high, and then it will fill up the gap. It did not filling up is somewhere to today, tomorrow, day after tomorrow. See, maybe next week, but it has to fill up the gap. Mean price has to bounce back down. So high to go low would be a nice push to the downside. If you want to have a very pure money 240 chart, low to go up, upper band to go down. British pound, PP, British pound, whole night it just bounced back above and below PP. And right now we have a push to the upside, but overall it's filling up the gap. Actually, it filled up the gap. The British pound already filled up the gap around this morning. If you see around 6 o'clock, fill up the gap. 5 to 6 o'clock, just hit the gap, fill up the gap, and shoot to the downside. And right now, Trump slowly testing the area. And same thing with the euro. Exactly, it's copy of our British pound. Fill up the gap and shoot to the downside. Same thing we are expecting from S&P 500. Dollar down, Canadian dollar below PP, and not much from yesterday till now. It just giving us like 100%. It just consolidated market. It gives us an Emma and not much movement. And then we have crude oil is coming down very close to our expected low for the day. It bouncing back up, but expected low is expected. FDAX is up. FDAX, same thing, fell, open gap, with the gap, did not have the gap. Gold is down. Yesterday went over extreme low area. Beautiful. It bounced back from our expected low. I remember it was 34.21, and around 10 o'clock it hit our expected low and shoot to the upside. 52, and then came down again, bounced back up and break our low at one those low. Test our then straight went to $207.30 gold. Big expected low. You see extreme low yesterday, bounce back, again extreme low and bounce back up, and then just matter of time if we break 32.2 area, 32.102 area to the low for the day for gold. That is somewhere 70, anything below 75 area. Then we have our copper and silver. And silver usually move with the gold, but
in these, it just shy a little bit. So this is up right now. It's just slightly pushed down, but above people area. 23 cents. Silver is up. The gold is much moving with the gold in these days, but usually they move in the same direction. Excuse me, natural gas is down. Natural gas right now below PP. It went up 11 cents, came down and tested. Actually, not come down. It just filled up the value area. It was out from the value area 7 o'clock. Get back inside the value area and fill up the value area and shoot to the upside. That's a very nice, beautiful push to the upside from lower band and low of the value area. Bitcoin is banana. Bitcoin is crazy, going up 95,400 high. And right now, just sitting in between 95,000 to 95.5 to 95.4 to 94.5 area. $1,000 just retracement. 8,195 swing to the upside. That's a big push to the upside in just one day. I would say just 24 hours push to the upside. That's a crazy big push to the upside on Bitcoin. And same thing with the Ethereum. Ethereum, our expected high is 1,900 plus. So far, we have $302 push to the upside, so 1841 for Ethereum. Bitcoin has more room, a big push to the upside. But the problem is affordability is very less for Bitcoin. So that's why people are just avoiding. Russell 2000, oh my God, look at the Russell 2000. It's crazy going up, Russell 2000. $148 push to the upside. Break even R2 area and getting close to our expected high for the day. And same thing with the S&P 500. Just hit our R2 area. Base is up, pressure is up. So stay on buying side. If you're done from R2, I would say just call for the day. Just be happy. Don't do anything if you are done. So far, R2 is, 78 to 85, 78 to 85. Done, G. 62, 20 points. Call for the day. Please, guys, take the areas. If you have any question, you can call me or you can text me. I will be here. Rizwan bhai, good morning. You're welcome, everybody. You're welcome. When he's talking, because then you're going to ask me how to go low, low to go high. So this is all news doing it. We had it predicted. Go on Forex Factory, watch the news. Market has gone crazy due to news right now. Oh my goodness. Minus. It's okay. Like, this is in the news. That was a critical time to not put a trade in. High impact news. High impact. Fraction of a second. Yeah, it's not fast enough in my opinion. Yeah. It's too.
It's gonna get crazy in about 4 more minutes, guys. These kind of situations, you away from. You gotta stay away as far away as possible. Don't worry, it'll calm down shortly. Yeah. Big news. So in about a minute, we have news coming. All right, more excitement. Because Black manufacturing. Take consider
That's why now it's bullish. It'll calm down hopefully soon. Right now, trading is just gambling. You have no idea which way it's gonna. So if you like gambling, this is a good chance for you to gamble. But the mid-band trick which you said, Impossible to put it. कहाँ trade लगाएंगे? लगाएं फिर आंखें बंद करके एकदम 200 और 300 minus होगा. You know, 1510 you cannot see Oh, the green, it's impossible right now. price prediction. You cannot see the price prediction on the 1510. No, it's impossible. हाँ जी, हाँ जी. अच्छा वो मैं ट्राई कर कुछ ज्यादा छेड़ेगा तो ऐसा होगा. मैं भी कल छेड़ा आज. एक बार close करके buy from 320 also. Yeah, same. No issues. Sir, R2 is well invalid. Done हो गया ना? The R2 is finished. Starting to calm down slightly. Next news 10 o'clock, guys, for the new home sales. R2 is done, 19,113.
It's running like somebody is after the. This is not fast enough. You will see the day interest. There's days last week, none of us can use anything. When Trump speaks, the tariffs, there's no possible human can put in an order. Yes. He is. When he said, in the morning, he said buy. At 1 o'clock, he said no more tariffs. So look, one statement that he's not going to do China anymore, and things go back to our favor, right? What? I went from there to there. I was in profit and then break even. So this is 53. Roller coaster is slower. How are you going to be able to put a mid-band order? This is... Yeah, it is. Yeah, if you like in gambling, this is perfect time. This is a slot machine. Place and then it will land somewhere. Sometime I see 300, I click close, I get negative 50. That's what happened to them. Okay, so what is happening is this. From your machine to Chicago Mercantile Exchange is 20 clicks. And so let's say you see a price on your computer certain, sir, and then all of a sudden you will see completely different price on. Look at the midband and look at the market. Like the difference is almost 5 points. Right? I don't know. हाँ जी अगर ये आपका वॉशरूम ब्राइट करें मैं साफ सुथरा रखें गल 6 लैंग्वेजेस कर लिए चैट जीपीटी ना पंजाबी सर गल है पता की पढ़ना किन्ने मेरा क्वेश्चन ਜਿਹਨੇ ਪੜਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨਾ $5 ਲਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਚਲੋ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ हाँ ला ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਗਵਾ ਦਾਂਗੇ हाँ अच्छा यही I'm in short. Let's see. Good, made a bit of money.
हमारे जो चौधरी साहब हैं मिस्टर ट्रम्प, तो अभी नैस्डैक को तो हम सिर्फ इतनी इतनी दूर से पकड़ रहे हैं क्योंकि उसकी स्पीड लाइक चार्ट से नहीं काबू आ रहा है। S&P देखें आप, साल पहले अगर 30-30 पॉइंट मूव हो रही थी, ठीक है, अब तो 200 पॉइंट एक दिन में मूव हो जाती है S&P। सो इट्स ओके, वी गो विद द फ्लो, दैट्स द one more time testing our, oh absolutely, no thank you, catch करें, thank you। Two minutes to news, guys. All right, seems to have calmed down slightly. See if those mid bands are starting to become a little easier. Green to buy, things are 2 points. In this whole 23 hours, your target is 2 points, $100. Everything else becomes, your own choice. You see how crazy goes, 10 o'clock? There you go, good for you guys. Yeah. Oh, again. Don't. Things will go crazy in a matter of a blink of an eye for you. An eye is faster. Bananas is still. क्योंकि न्यूज कोई भी नहीं पढ़ रहा, सिर्फ कि 10 बजे लिखा हुआ था कि ये होना है. So it shot up, came down to the same where it started. So 10 o'clock news is not good for the market. so let's see if it shoots down. Right now it's hovering at R2. So let this noise go. So we went to 5,500 for ES. आंखें बंद करके दुआएं करें और ट्रेड ना करें, बस कोई और कुछ नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं चलती. न्यूज के दौरान तो गैम्बल शुरू हो जाता है.
कोई strategy नहीं चलेगी अभी. That strategy Sit away and watch. I'm waiting for the price expected high. When it gets to expected high, I will do a short. That's it. 55.50, I'm waiting. When it gets to R3, I will sell. That's it. That's my strategy. right now is hovering near R2. No? अगर आपने फन करना है अपनी मार्केट स्विच करें Nasdaq में, NQ में जाएं, फ्यूचर्स में, सिर्फ देखने के लिए. All of you guys should know कि Nasdaq कैसे बिहेव करती है. So that will turn you into a slot machine player. आप क्लिक करेंगे, $800 नजर आएंगे, वो क्लोज कर. So it's but just to show you in the market where you see instrument, you'll be able to see right here on top. ये लिखा है instruments, MNQ, NQ. So price NQ is Nasdaq. Most of you may not be able to comprehend on day 2 on how fast that moves, but it moves blink of an eye. Each Nasdaq point is $20. So each this is so just for sim purposes, you can enjoy. This calms down after 6 p.m. in the evening. NQ. यहाँ पर ये देखें, ये लिखा NQ जून. फ्यूचर्स में नजर आएगी आपको, फ्यूचर्स में. No, just see. Just to see. Just to see. You're not losing anything. Because eventually you guys will be watching Nasdaq to determine ES. Because wherever Nasdaq goes, ES goes, right? So, see, for last 15 minutes, market is like this, consolidation at R2. It's okay. Just It's nothing. enjoy. NQ June 20. Yeah, once you make 2-3 points, that's it. Yes. Close the computer. That's it. गोल्ड मैं नहीं अभी जितने 5 दिनों से जो गई है ना उसको नीचे आए जरा 3000 तो कुछ खरीदने क्योंकि वो ये मार्केट चढ़ रही है ना तो वो गिर रही है, उनका कोरिलेशन है. तो एवरी टाइम इक्विटीज विल गो अप, गोल्ड विल गो डाउन. Every time gold, these will go down, gold will go up, right? So everybody is dumping that and buying this, right? So, but right now for last 10 minutes, it's stuck at R2, right? R2 पे सीधी चल रही है. हाँ ठीक है, मैं अभी आपकी डाउ क्या कहती है, किसी उसने डायरेक्शन बनाई, सारे R2 में खड़े हैं अभी. 19,145 it went to
19,145. Gold is GC. So you work with Nasdaq. You don't. No, I do Nasdaq for areas. Until it reaches a number, I'm not buying and selling. So today, right now, for Nasdaq, I'm waiting for the price of 19,450. That's until it gets there, I don't care what it does in between. It's impossible to even watch a chart or Bollinger or anything. It doesn't matter what chart you bring. So Nasdaq, I'm waiting for 19,450. That's the strategy you apply and you suggest. Just areas for Nasdaq, nothing else. There's people who play overbought, oversold, 30-20, and it gets to 99.9, sell 5 points, exit. But you need experience to play that. But ES, full of slow market, what you witnessed yesterday or the day before, mid-band to go up. Even before the news, I saw when he was speaking, 4 mid-bands worked, going up. Buy, done. Right? So it's just this chaos is news, right? Because trillions of dollars are being traded. So when it's a storm right now. So if you enter, you're 50 per 50. Is it going to go up or down? We have no idea, right? So there's over 1,000, 5,000, 10,000, 100,000 account has no value, right? So I have users who are sending me texts, 1 MNQ, 300 done, 1 MNQ, 400 done, right? So if that's how NASDAQ moves fast, right? So
compared to yesterday, S&P is also moving. Oh, it's too. This is again not fast enough. There were time I can't even touch a ES. This is not a normal behavior of a president to say, okay, we're going to do this, and the market shoots up. And then he said, one night he said, I'm going to fire the Fed chairman, and the market goes down, right? So the guy has no stability. So, but those who trade fast, this is the best opportunity to go in and then be ready and then get out and done. You don't have to wait on a candle to go up and down. I think he asked his, investors, do you have the money ready? He Yes, said yes, correct. And he said, It's "Okay, all I'm not-" inside trading, Yeah. 100%. His son-in-law, he made trillion. Yes. And they don't even care anymore. They're like, hey, it's okay. So, yeah, right now, अभी gold सही चल रहा है, somewhat reasonable. Okay, this is how it's supposed to be. You sold at a mid-band, came down slowly 2 points, and it's giving you some money. There you go. See, beautiful mid-band. If it's magenta, it follows. Top of the bar sell किया था, 2 chain point लें. So you will get opportunity along the lines when the market is calm. This one mid-band has done your whole trade for the day. So
Okay, another mid-band picked you up, went down. Issue is so hard to wait for Nasdaq for a certain number, 19,450. Another mid-band came down, and 3 mid-bands coming down. ये टॉप ऑफ द बार ले रहे हैं अली भाई, सर्कल से 4 दफा आप निकल चुके हैं। मजाक कर रहा हूँ, सॉरी। देखें 4 मिड बैंड नीचे जाते हुए आपके। सो इफ यू स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट इन द न्यूज, थिंग्स विल कम टू यू। What's the low for today? Nasdaq 10 o'clock, 9 o'clock. So let's do 18,886.
No, it's like more than 2 months and I already mentioned that I'll be happy to do it. I gave it for renewal in January. I had a word with Manju. Yeah, I had a discussion with her. She was not responding. No. Yes. I will get it in 20%. Okay. No problem. Okay, thank you, sir. Okay, taking out. Some volatility again. Yeah, almost 10 points. With some news there. An award. ट्रीटमेंट को फॉलो करते रहो हम अपनी Are you boss? It's the entertainment. Yeah, I have to be at 9, not 9:30.
just shooting up and now. पिक हो गया अभी जब चलो जाएगा तो निकल सही है It is not reaching out to. Sorry? I think it's not reaching, none of it reaching R2. I think it's just not. Yeah, R2 is becoming a very strong. Yeah, it's very strong. So those who are joining late and interested in a funded account, Apex is 90% off. Code is on super areas. Bullnox is 91% off. Take Profit still has a sale for, and I believe these are the only two companies that are on sale. So you get a capital for $15. So again, if you wanna, when you're ready, and then these sales come and go. So generally they range from $15 to $50. So the idea is that once you know how to trade, how would you make money? Question is, so you would go and put your own money. All right, how much you want to put? 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 100,000. I've seen 139,000 evaporate in 30 seconds too. So the guy had like 40, 50 lots, market crashed, money just goes. So it's not the size of the account, it's not like you have 100,000 and you're going to always make money. No, you put the wrong lot size. If you have $100,000 account and the guy puts in 50 lots, what is a 50 lot? The number which we put like The 3, one 5, quantity. 4, 7, 10, 12. That's No, quantity on the right. Quantity, number of lots. Yeah, that's So if you put in one, it means the $1 will move and you will get 50 plus and minus. Imagine you put 50 there, right? That means 50 times 50 is at $2,500 one tick, 1 point. It moves, right? 2,500. And I think it was sitting where you are, $139,000 account, right? Didn't know, thought was putting in 5. 5 lots on a big, it's a reasonable. Ended up putting 50 lots. And market just went crazy. So 139,000 divided by 2,500, market moved 50 points, account is gone, right? So you have to be, that number is going to save you or break you. That number of quantity, because I've seen people, they are in M&Q and accidentally they put in 50. And because if they're scrolling, put your mouse there and start scrolling accidentally. So if you have your mouse in here, right, and you accidentally just scroll, watch what happens. You see, it's changing. So then all of a sudden you're like, oh my God, what happened here? So you were scrolling a different thing, but you were inside that quantity scrolling. So and then all of a sudden, let's say I didn't see. I'm like, all right, scrolling, and I'm up to 30, and I go buy bid, and all of a sudden, if it picks up, I will still do a buy ask. You see how fast, and now I'm in 30, and I'm like, what is going on? I was supposed to be in 3 micros, and I'm in 30. It's a full lot, right? So if you're lucky, you'll make faster. But if you're not, then it's pure luck, right? So things are green, so I hit buy, right? But so I did a buy, and I'm going up because things are green, right? So the idea is you have to be very, very careful with this quantity thing and accidentally stick to 1 for now. That should be enough. I just did that at 54.86. So
coming back to this point, like you said that you take an account. Yes, yes. Oh, sorry, I kind of got mistracked about the. So give yourself 3 months. So fast forward to, let's say, May, June, July. And then you're like, I've been coming in, I've been watching, I know where to buy, where to sell, what is a mid-band, what is a divergence. I want to make money. I'm tired of making money on sim. So what's the process? The process is either you take real money and go to a bank or a broker and say, I want to open a futures account, right? Since market is not doing anything, might as well explain you what your pathway is going to look like. So if you can hit that light, please. Thank you. So you decide, all right, I'm expert at futures trading. I know how ES works. I can take a mid-band. What are my options? So your options are going to be own capital. We use the word own money. Own capital. That's your first options. Now you decide, I'm getting into trading. I bought software. I know how to trade. I think I can risk some funds. But don't risk it like, hey, if it works for me, I'll do it. If it doesn't, that's the money I put aside towards trading career. That's not the right approach, by the way. Approach should be, I have to make this work. And I'll tell you a quick story before I go into why it has to be a serious business. If you are a student in Canada, right now, poverty line in Canada, Toronto is $4,000. If you're not able to make $4,000 net, one income, 2, 3, doesn't matter, you are poor in terms of you can't afford things. Meaning, a basement, there's a statistics in Canada that it used to be 2,500, went to 3,000. Now it is at 4,000 Canadian dollars. If you're not taking a $4,000 at home, you can barely survive because of the rent, gas, hydro insurance, food. 4,000 is minimum. Now a graduate degree in Canada earns around $80,000 starting. That's a starting entry. So I'm just giving you a prime example. If you have graduated, you will earn $80,000. In marketing, that's generally the salary for a graduate. Now, $80,000 which means will give you at take home about $61,000. So you're taking home $5,000 every month. You're living after graduation a reasonable amount of money. So let's say your take home pay is $5,000 after taxes, everything per month. Now, depending on your structure, how much money you can make, how much you can save for vacation, everybody has a daily budget, monthly budget, yearly budget, vacation, gifts, healthcare, food. So you need $5,000. That's the goal. Now, if you're a graduate, let's say you are 24 years old or anybody, and you come to Canada, pretty much the same, and you want to buy an asset or do it, and you want to put together in 1 year, you want to say, you know what, in my savings, I want to have $50,000. Now, in a realistic approach, to save this money for a new graduate takes about 3 years. About 3 years, you save it 1,000 here, 2,000 here, 1,000, and in about 3 years, you'll be able to make 50,000 as a savings account, approximately, depending on your income, of course. If you're living hand to mouth, of course, this is a difficult number. Even in 5 years, it could be difficult. So what is a approach that we give you an opportunity where you can make some money on the side, right? So how would you come up with 50 grand, let's say in 2 years, 3 years? So that's why I say come into trading. You can, with relatively less money, you can get a reasonable amount of money every month or year. So you've learned the trading, you're good at entry, exit, and you decide, all right, I'm going with my own capital, and what should I be doing? So if you should at least have $2,500 minimum. If you want to invest, I would put it as even at 3,000. So 3,000 is a number these days. If you want to start your own broker account, 3,000 USD, everything goes in USD, everything. Now
You could have a 30,000, 100,000, 150,000, or a million. I don't care what I don't recommend you to open more than a $3,000 account, because if you slip, you can slip fast. Just like what you witnessed today, this morning, things can go chaotic. And if you're not careful, real account will get liquidated and you will leave trading. I will tell you this, if somebody manages to lose their first investment, statistically, they will not come back to trading for a long time, maybe a year, 2 years, because this is US dollars. To lose this, you are going to go in pretty fast. So that's why in the early days, a few years ago, Daniel used to not tell you a broker's name for 3 months. People are excited. Yo, this is so easy. I go buy, I make money. I go sell, I make money. And then you go into trading, 2 weeks and you lose money. तो मैं यहाँ कहता हूँ 4 गालियाँ देते हैं. एक आप मुझे देंगे, एक डैनियल को, एक इंडस्ट्री को, एक सॉफ्टवेयर को, कि यार पैसे ज़ाया हो गए मेरे, राइट? सो खुद को तो देनी नहीं है ना, क्योंकि न्यूज़ थी, आपने गैम्बल किया, खुद को क्यों देनी है? कसूर तो हमारा है. हम आपको चीख के कह रहे हैं 9:45 पे न्यूज़ है, खुद को क्यों देनी भाई? हमें देनी है. एनीवे, सो ये टिपिकल है. आप 12,000 में से कोई कैंडिडेट साथ मेरे साथ बिठा दें, डैनियल की 1-to-1 निकाल लेंगे, और रूट कॉज क्या निकलेगा भाई? यार डिसिप्लिन नहीं है, यार रिवेंज ट्रेडिंग हो रही है, यार जितना अकाउंट है उससे ज्यादा लॉट बड़ा डाल रहा हूँ. So now after 3 months you have an options to invest your own money, or there is something called OPM. It's not the Afghanistan drug opium. It's called other people's money. So other people's money means you will buy an account, let's say $50, a regular price, because the prices change. You get opened an account with a company called Legends. So this company is called GFF, Global Financial Futures. You can do in US, California. There's another company called AMP. We don't get commission from them. We don't get anything paid. They're the only 2 brokers. It's not like you're going to put a trade, I'm going to get money. It's your money, like bank. You make money, congratulations. You lose, I'm sorry. We have nothing to do, which you can just say, hey, go there and open up an account, just like we're not affiliated with any bank. Now here, these are called funded accounts. So before you risk this, you should go and open up an account for, let's say, $50. And how much money they will deposit in your account? $1,500. It's not money coming to you. They're giving you a username, password. Money stays with them. So they're like, all right, they'll give you a Rafe123 password. You can log in through Ninja, and you're able to, sorry, a bit of a trade. So what is your target? How do they assess you? They open up an account for $50 for 1 month. They charge you $50 up front. This takes 2 weeks. You have to submit your property documents. You have to do a lot of things, because they will check if you have the risk to be able to take it. So if you ask for $3,000 account, they're going to say, make sure you can earn and lose that There's a lot of, and this takes 2 weeks to open up an account. Got to upload the passport, driver license, quite a few things. It's legal. It's regulated by government. CRA sees everything about you. SIN number. Here, this is a little bit of a kind of a on your way report. If you like, report. If you don't, it's up to you. You open up an account, 30 days. They want you to make $1,500. That's it. That's the target. So what is the goal? Goal is to turn 25,000 into 26,500 and make sure you don't lose the money of 1,500. So this is your exam. Exam is now. A lot of people say, market like today, I can do this in 1 minute. No, they want you to see for 7 days. 7 days, they will say, all right, I want you to trade with 6 or 7 conditions. And then once you guys get to that bridge, I'll show you how to cross it. Meaning, do not make more than 450 in 1 day. That's a condition. So once you cross this, then there is another bridge. Because remember, here, $50 got you 1,500. Here, real money, it's 1-to-1. If you lose this account, meaning you put a trade and things instantly 1,500 gone, you only lost
It's not a real capital, right? So when this is stage 1, you go into stage 2, and stage 2 starts with the same thing. They start an account with 25,000 for 1,500. The goal starts to move slightly up. So this stage 2, any money you make is yours. How much stage 2 cost? $150. So 10% is your risk and 90% is their risk. Meaning in stage 2, if you manage to lose $1,500, you will lose only $150. Doesn't go on your credit score, doesn't go on anything like that. So that's just a way for you to test. So before you use your own capital, you can test your skill. Am I able to? Because the skill, to be honest, you know what a skill is? I've been sitting for 1,000 days in futures market, 20 years. Skill is not to trade. To sit back while everybody was getting excited. I know it's the first day. You know what I was waiting for? R3. Didn't go there. It's okay. I am waiting for my number. 19,450. I'm waiting. These kind of things will happen so many times in Trump's 4 years tenure. It's going to go crazy. Your job is not to, yes, when the market is smooth, you can find opportunity. So the idea is you can sit and look for an opportunity. Hey, everything is green. Yes. Yes. So you said that you were looking for RP. Yes. According to you, that was the safest time to enter. According to you, Yes, there is because no safest time. there's actually every trade has a probability, right? It starts from 50% and goes higher. So this is how I observed. I came and I looked at what happened last night. Last night, market shot up crazy because Trump and Powell agreed, right? So that's a statement news. This morning, he agreed more that we're gonna not fight with China, right? So that's the news, right? So, and then we had 2 news at 9:45 at 10 o'clock. So I observed and I looked at, okay, what is my game plan? Somebody asked me, what am I supposed to do? I said, I'm waiting for R3. If you want to jump in, go jump in. I can't stop you, but R3, in my opinion, is the safest today. Sometime if the price is at S3, S2, S1, doesn't matter. So we'll assess, because for Nasdaq, there's only areas, meaning that I'm waiting for a number. If it gets to that number, I'll take my few points, 5, 10. And I have a daily target, by the way. The way I play with these, I have 52 accounts. I have 20 apexes. I have 5 take profit, 1 per dia. These are all companies I'm saying. Bullnox, I have 3. Payout is coming tomorrow for them. What else? Legends, I have 10. So 52 accounts, I'm separate. I'm not here to make $100,000 a day. My goal is $50 to $150 per account times 50. If I make $100, I have 50, I automatically make $5,000 in that day, right? And my goal is feed this, slowly with the micros 1 and 2, and then you will get there. So this is where you will eventually go, maybe in a year, maybe in a 2, when you're managing multiple accounts, okay, 2 legends. And so coming back to the point of R3. So today I assess, I will take an area. When you guys all sat down, 30-20 was green, 15-10 was green, and things were smooth. And before around 9:40, even 9:35 when they spoke, things were fine. And all of a sudden, chaos came in. So I'm not the type of trader who trades inside the chaos. Some people like it. It's adrenaline rush. You go in, you click, you make money, you get out. Some don't. I like to sit on the borderline. I'm trying to see what this is going to do to R2. That's all I'm doing. Because it's so many times R2, it's stuck, both markets. If it goes to R3 on ES, I will just sell. If it goes to S2, I will buy. Because in the queue from the Daniel's brief, I had to pick up 2 lines. What is the strategy for today? So he said low to high, high to low. That's all I needed to hear. Low to high means when the price goes to maybe S2, I will buy.
When price goes to R3, I will sell. Because when I opened the computer, R2 was done at 9:45. So I missed an opportunity. So now I'm waiting for R3. That's called an area trade. Where are your opportunities? Bottom of the bar, he's expert at it now, Irfanji. A lot of, like, you will see where I can place a trade, buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, and there's lots of ways. So once you're comfortable with your entries, that the goal is this: every day you come and you're able to make $200 to $300 consistently. Not like 1,400 plus, 5,000 minus 3. This is not is healthy. Even a heartbeat has to go normal rhythm. So your goal is, I sat down, I managed to, without the news chaos, $100 to $200 if you're able to make for, let's say, a month. I think you're ready for this exam. You will take the exam. It's not a written exam. They don't ask you what a divergence is. They says, hey, turn this amount into this and you pass. How you did it, we don't care. So this is your challenge of a funded. So, and you can fail maybe 5, 10, 20, 30 times till you figure it out. Because remember, every time you fail this test, you're losing $50. Let's say you failed 20 times. It's, man, I'm trying something, I'm not getting it. But rather than going to the bank and depositing 15,000 and playing with real money, because sim is always going to feel like sim. Sim is like, hey, I'm not getting. Here you have a challenge. So if you fail 20 times, you lost $1,000. But if you failed real 15 times 10, that's $15,000 has gone out of your pocket. Eventually, I think by the time you have failed 4 to 5, you slow down automatically. You're like, I gotta now see where am I losing. So if you fail 4, 5, 6 times, it's normal. Then you're like, now I will sit down, and then, so this is how the funded program works. So any more questions I can answer on the funded account, no problem. Do we get the money in the first stage? No, second stage. So first stage is just to test your emotion, your discipline, your entry, your exit, because there's different conditions here. It's easier said than done. You have, like, to you, your eyes are looking at, this is my exit, this is my entry, and your path is straightforward to 1,500. No, I swear that the path looks like this. You have this, and then you have landmines along the line. You will get, I know where the landmines are. Majority of people overtrade, revenge trade, wrong lot size. And you will explode maybe at 90%. Oh man, I had already made $1,200 out of 15, and I went in to get one last trade, and it blew my account. And you will close your trade at 4:30, and they will close your trade at 4:49 and blow your account, right? So there are a lot of things you have to keep an eye on in terms of discipline. So these are line mines along the way. Apex is the most difficult. What's the value of that account, the second one? It's 150, but still, you get $1,500 worth of capital. So that's what you get. That 150 is gone as soon as we get the account? We get No, 50. that you pay that, and then you have this. There's no expiration. There's no monthly fee. You will have that account for life. So it's not something there. So it's a real account. You don't get to withdraw until your balance goes from 25. So this is a fictitious number. So they will say, all right, you have a $25,000. It will go to 27,000, and that's how that kind of works. So, sorry, keep looking at my trade. So we will get a trading capital of 25,000. No, 1,500. 25,000 is just a number, because it's like, this is your starting line. I want to see your finish line there. I believe right now we have a capital of the demo account is about $100,000. Correct. So whatever we have, we're going to be getting like a 1%. Yeah. So because this 100,000 is completely just to get you excited. You can change that number, right click it, change it to $1 million. Doesn't matter. That has no value. So that's why I never, because here's what happens. You have a $100,000 SIM account. You have been practicing, and this is how most traders, by the way, do. They have a trade go down. Let's say they pick
two quantity, two ES, each valued $100 or even 10. 10, like, okay, just to feel good, you put 10, and each point is now $500. $500 per point rather than 50 because it's 10, and then price goes down, down, down. You see minus 6,000, minus 8,000, and the price comes back up to plus 2,000, and you feel good, and you think you're a trader. This is not realistic because you're not going to open your account with $100,000. So what happened? This is just दिल को बहलाने के लिए अच्छा idea है कि यार मैं trader हूँ. So majority of it is not going to play in real life. You know what will happen? You have a $1,500 account. You go in with 2 lots. 5 minutes later, you're like, पाजी नवा account खोलना है क्योंकि वो $50 चले गए हैं क्योंकि आपने डाले थे 2 lot. वो था $100 का. Market आपके against 15 point गई. $1,500 खत्म हो गए. And then you start gambling. You're like, now put the $50 more in the machine, and I get a new account. This sounds like a video game parallel when you It is. So this is 100%. You're not going to respect the trading. It's not going to respect you. The idea is you go and look for an opportunity. Then you switch down. Eventually, I'll tell you, go into micro from day one, and you're going to go into micro after failing 5 to 6 exams. You're going to say, all right, now I can switch down. So when you have this, yes, you have a 30-day deadline. You have to finish it, right? So, okay. You may be able to play with 1 lot. It's fine, no problem. But when you get to stage 2, if you go more than 5 micros, you are going to blow your account and go back. Okay, by the way, if you fail this, you go back here. You got to finish your round 1 again. They will not pay you until you complete your round 1 again. So 99 पे फिर सांप डसेगा, आप यहाँ आ जाओगे, फिर वापस चढ़ जाओगे. फिर तो eventually क्या होगा? मैं आपको ये भी बता देता हूँ. 4, 5, 6, 8 महीने बाद आपने 100 अकाउंट तबाह कर लिए, $2-3 माइनस में या ज्यादा, फिर आप छोड़ जाएंगे. आप कहेंगे गोल नहीं है ये, गोल. फिर ये होगा कि आपने याद ही नहीं था, आपने कहा यार ये फंडेड मुझसे नहीं हो रहा, मैं रियल में जाऊंगा. अगर ये नहीं हो पाया तो ये कैसे होना है, यहाँ पैसे लूज करेंगे, फिर छोड़ ही जाएंगे. Right? So idea is to go slow, as slow as possible. You can go and you can make money. I have people who are 10 accounts. So coming back to this, where you will get my cousin came from Holland and we uploaded a video. He came with a business plan. He says he flew here, he's like, I want to make $50,000 in 1 year. Give me a business plan. So I said, all right, what we are going to do is the following. So I said, open up an account for $5,000 with Ninja. This is a live account. I gave him a per day account, 3,000. I gave him Bullknock. So together, we came up with 10 funded accounts. 10 funded accounts. And I said, every account, I want you to trade $25 to $50 a day. A day. Don't trade on Fridays because it's a short day. If you have 10 accounts, if a $5,000 live account, you can manage to make with a couple of micros $50 to $60 a day. No problem. If you have a copier, if you know how to balance this act every day, $500 to $600 a day is easy. Forget it 5. So I said, you have 12 months. We're going to put together maximum $4,000 a month aside. $4,000 aside in 12 months. So now to make $4,000 in 20 days, you have to put together what, $200 a day? $200 a day. So I said, we're going to take out from per dia $50. We're going to take out from your live account $50. That's 100. And then slowly with 1 micro, 2 micro, 1 micro, अंदर जाते हैं 20, 30, 25 का ट्रेड डालते हैं, बाहर आ जाते हैं, खत्म कर देते हैं. तो गोल ये है कि $20 से $25 रोज कमाए और 5, 6, 7 अकाउंट हों आपके पास जो स्टेज 2 में पहुंची हो. Stage 1 में तो आपको पहले इसकी stages भी clear करनी. Only time you don't have to clear a stage is a company called Perdia and your own money. Whatever money you make from day 1 is yours. So that those are for advanced users because then the capital is cheaper. There's a company called Perdia Capital. They said, you put down $750.
will put on the remaining $2,300 for you. So they'll open up an account for you with this cost. $750 you put up, $2,300 they will put up. If you lose $3,000, you only lose $750. Do you see how it starts to get higher and higher and higher? Starts at 50, but 2 stages. With $750, it's 1 stage. Go in, get it done, get out, things like that. So that's companies called Perdia Capital, and they are we call them semi-funded, meaning that you're not fully funded. Fully funded means they're giving you everything. Semi-funded is some money you put in, some money, and non-funded is your own capital, right? How you would like to trade. And this account can be opened in any country? Any country in the world except Pakistan. They have it. Iran is not allowed. If you are a citizen, if you're a Canadian citizen, you are allowed to open the account. There are 9 countries are banned to trade globally. So it's Pakistan. No, none, not at all. They're okay. They're good. But you have, like I said, if you want to save someone taxes, make sure you open your account with your Emirates ID, your Emirates bank, like, everything like Sharjah, things like that. So you open everything through them. And your address, your driver license belongs to UAE, not here. Yeah, so then if you have everything, then you open your account from UAE bank. Because otherwise CRA knows, and then, We can start with this and then move. Yes. There's lots of possibilities unless I come back to scratch everything. Nothing matters unless you know how to put an entry together. Yes, sir. Also, we can open a separate country, separate account. Separate? Separate country, separate. Yeah, you can open, no problem. Like if we you, have 10 accounts in one account. oh, you can do, you will run out of ideas. There's so many companies. You can open 80 accounts right now. Sorry? Yeah. So there's lots of options for you to go ahead. 33% at least. Nothing, because it's an income tax. You're holding a trade less than 3 months, so it's not capital gain. It is income tax. But here's the thing, taxes and fees, we worry at the end. Like until money comes in, that's where you're taxed. If you're not taxed on losses, so you don't have to worry in that particular sense. So these things are what is the platform? A Ninja. Oh, Ninja. Correct. So this is how your kind of things work in terms of capital. This we have on the videos as well. Yeah. I break before I do anything. I take a company apart. I do their exam. So if you go on our YouTube channel, last 1 year I've done Apex, Bullnox, Perdia, and I show my account. Hey guys, this is I'm buying today. This is I'm passing today. This is I'm withdrawing today, right? This is how you take the money out. So every single thing is documented well enough for you that you don't have to worry that, hey, what's going on with and you get, again, none of this please matters. If you don't know how to enter, this is a waste of money and waste of time. This is, you're like, if you think you can trade, just show me a track record. Every day you come, make 20 days, $200, shut off. Meaning that, okay, not shut off in a sense is, by the way, you can open 100 SIM accounts. Right click, open a new account inside there. So if you pick one account, say, all right, this is my account that I'm practicing. So set the size to $1,500. So I'll show you quickly how to open a SIM account. So go to your thingies. No, I'm in profit. Close, flatten. How do I flatten? Good. Okay. So if you're connected, just right click here in the accounts tab. In the accounts tab, right click. And you can say add new account, add new SIM account, and give it a value. No, at the bottom you will have accounts tab. Yes.
and right click, it says add simulation account. Oh man, market is still crazy. It is impossible to put it. Okay. You guys you guys can see it? Okay, no problem. Okay, go in your accounts tab. Do you see accounts tab? Okay. So if you right click, and then you will see add simulation account. So that allows you to play with another sim account and give it a value. Let's say you want to give it a value of 1500. No. Yeah, initial cash. देखिए नहीं अकाउंट्स टैब में जाएं, इसके अंदर राइट क्लिक करें, इसके अंदर और क्लिक करें, इसके अंदर और वहां पर अकाउंट बन जाएगा. वो लिखा है ऐड सिमुलेशन अकाउंट. Man, market fell crazy. 5,400 and 54.6. Yeah. Okay, so whenever we will, look for an account, this account will show, huh? Yes, yes. So when you now you will see demo, SIM 101, and then SIM 1 with a different name. So the put it something together. Like I wanna take an account. Let's give it $1,500, for example. So that will give you an idea: is are you able to make $200 a day, $50 a day, and don't go less than like 100 because you want to finish your exam in 20 days. If you make $100 a day, and but here's the kicker though. The way the exam works is every day. Let's say you made 100 today. It's not like tomorrow you can lose at 1,600. Remember this. This is they're built into their exam. So let's say today, day one, you made 100. Your target went down. Now you only have to make $1,400. Now tomorrow you come, you can only lose 1,500. And then next day you come and you make, as you're making money, your targets are going down, but your ability to lose is only 1,500 maximum. So tomorrow, so let's say day one, you made $100. So what was your target? 1,500 to 1,500, 1-to-1. And you made $100 today. So tomorrow you came in, you now have to make $1,400, but you have 15 available. You made another $100. Next day you come, now you have to make $1,300 and you have 15. As you see, the scale is changing. So some users think, well, I made Monday 100, I made Tuesday 100, I made Thursday 100. Can I lose $1,800? No. They will not give you more capital. So the capital doesn't add up. It's like a test you have to come in every day. Come in and perform. Exactly. So you have to say, hey, this is your starting capital. Can you make, or don't lose this. If you, now day two comes in, God forbid, you lose $500. Okay, it can happen. You have to first calibrate your mind. At which daily loss I will shut off my computer? At which daily profit I will shut off my computer? If you can, me and Daniel, we talk for hours, and like we're trying to always find what is going on. Why is this student struggling? They're like, we came down to two conclusions of 4 or 5 years. Number one, they have no idea how much they want to make. They have no idea how much they can lose and close the computer. In $1,500, if you lost 300, you're not trading. It means things are not going in your favor. However, if you have made $150, close. So you have to close. No, it's not like, I want to keep trading. 4, 5, 6 trades, 2 or 3 bad, close. Because what will happen is you lost 200. Now your mind is going to go and try to recover it. It is more psychological, more emotional. I have done this many times. Last time Bullnox, got to a certain point. I'm like, you know what? Let's make it one more $50, and then this will be my threshold, and I will do now I'll give you a live story. Person sits right here. Name is Gurvinder. I know probably he's hearing it and he's gonna laugh. He's our fastest guy who made $400,000 in 90 minutes. 90 minutes, he completed the exam. He bought 20 Apex, the biggest ones, and he completed the exam in 90 minutes.
because Apex has a deal. You can complete the exam in 1 hour. We don't care. So he finished it, and then he got into stage 2. He got into stage 2. He was the first guy to get in our organization $35,000 single payout from the company, Apex. Great, everything goes back in. Round 2, sitting right here. Stage 2, you have to trade 10 days. They cannot give you the funds. Now, day number 8, he has completed all the target. And I asked Paji, sirf asi Monday nu jawange, sirf pay out the button dabna hai. ठीक है, वीकेंड कहाँ आ गया दरमियान में. डे नंबर 9 है. मैंने कहा आपने $1 का ट्रेड डालना है, सिर्फ ट्रेड इन ट्रेड आउट. यू ठीक है, कितना पे आउट मिलना है? $70,000. कितने दिनों में? 9 दिनों में. राइट, exceptional trader, knows how to trade very well. And then Monday comes. So I'm like, man, रुक जाओ. Greed, emotions kick in. That एक दिन उनसे इंतजार नहीं हुआ. And he lost money-wise, he lost only $3,000 because the account fees was like that much was the cost of those 20 accounts. But real capital, in my opinion, lost 70 grand. All he didn't do is wait for Monday to come and hit payout. Right? So all of you will go through it. Just, I haven't seen 1 out of 1 yet. A person who is so calm and like, so it's this excitement of these candles will get to you. I'm telling you, you will say, यार ये अब जितने आपके नर्व स्ट्रांग होंगे, अब ये आप अपनी लाइफ में देख लें कि आपकी it doesn't excite me anymore, to be honest. मेरे लिए तो बैठे बैठे ना, अच्छा ठीक है ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर. So the more excited you will get, the faster you will lose, right? So this is speed of light, right? So यार देखिए हमने इस हो ये क्या यार कि वो ओवर ईटिंग से मर जाएंगे, क्योंकि वो इतना ज्यादा है कि हम कैरी भी नहीं कर सकते. लाइक तो अगर आपको कहीं वो पुरानी मिथ स्टोरीज हैं, किसी कार में छोड़ दें, वहां सोना ही सोना है, आप कितना उठा लोगे? फिजिक आपसे कहीं यार 1 बैग भरोगे, 2 भरोगे, 4 भरोगे, इतना ओशन चल रहा है, अब कितना ले लोगे? तो इसमें यह है कि आपको एक टारगेट सेट करना है कि हम आते हैं $50 to $100 a day पे लोगों ने बनाया हुआ. और मैं हमारे पास ये एपेक्स की स्टोरी है, इस बंदे ने अकाउंट्स लिए. You can all read it, how his trades come in. Watch it. Go on super areas and the guy tells you step by step. There is a story called Your Path to $100,000. मेरे ख्याल अंदर या नीचे पड़ी है, right here. So he tells you how many trades I took, bought the accounts, got the certificate, and says, look, day 1 I made trade entries. Take a look. He completed his exam like this. First day, on 6th of January, he only made 50 in 1 trade, 87 in 2nd trade, 3rd trade 75. 3 trades, right? And 1 trade, it took him only 8 seconds. 2nd trade 58 seconds. 3rd trade. So total what? Roughly around $200. Day number 2, he took first trade, took a $50 profit. Second trade, he lost $200 and closed it. Maybe stop loss get hit, right? 3rd trade, he went in, he recovered $262. So in that case, made $100. 3rd day, $150. 4th day, $162. 5th day, lost $750 and called it a day, said not trading. Day number, so basically, end of the day, you can look at a history. A person to pass an exam, it took them maximum number of trades. So देखें यार 112, 150, 162, 330 का अच्छा दिन लग गया, और टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स 32 दिन ट्रेड किया, और नंबर ऑफ डेज कितने ट्रेड किए? 12 दिन. 11 से 12 दिन आपके ट्रेड हुए, 100 से 150 है, आपका एग्जाम पास हो गया, आप स्टेज 2 में चले गए. इसी स्पीड से करें या इसको भी स्लो कर लें, इसका हाफ ले लें, and you will get your payout. It's not rocket science. Majority people are stuck in the emotional issues, stuck in psychological issues, stuck in revenge trading. Technically तो आप सीख जाओगे मैक्सिमम 2 माह में, 3 माह में कि यार यहाँ से बाय है, यहाँ से सेल है, ये मेरा एग्जिट है. So
So these are amazing stories, and you can meet person on a Saturday, not this Saturday, come next, $5,000 a day. बताएगा कितने कमाते हैं? $50 a day, $60 a day per account. Across 40 accounts, it adds up, right? But I'm not recommending any beginner to go get a 40 account. If you blew 40, you're gonna be in trouble. 1 account, 2 accounts maximum, and then build on it. So anyway, that's my rant on add simulation, and then give it a number. Let's say give it $1,500, a number. So then you know that I'm able to trade. Yeah, where it says cash amount, initial cash, exactly. So my simulation is grayed out. उसका नाम रखो अपना अमित रखो It's not taking it. Okay, once. Sorry, light on कर देंगे? Light. Okay. So you see, right? Yeah. Give me a second. US. Is there anything else today? No. Every day is going to be same. Okay. So right here, change it to 3,000. No. This is num lock has to be on. Yes, same. Disconnect and Yeah. So disconnect and reconnect, please, to do this. Did you? Areas? वो आप डैनियल से करेंगे, वो आपके फिक्स कर देंगे. 1 मिनट. आप भी इनके अपने चार्ट्स इनके बाद दिखा दीजिएगा आपके एरियाज प्लॉट करने के लिए. डैनियल के पास जाए ना, तो अभी वो भी फिक्स कराने जा रही हैं. उसके बाद आप जाके ताकि आपके एरियाज नजर आ जाए. कैंडल वाले के अंदर तो नजर आ रहे हैं ना, एना के अंदर नहीं. तो एरिया में कैंडल चार्ट में सिर्फ कैंडल चार्ट में. या आपको आता है ये देखिए यहाँ, सॉरी ये देखिए यहाँ राइट क्लिक, सॉरी. अच्छा, आप इस तरह कनेक्टेड हैं डिफरेंटली. इसको मैं स्लाइटली चेंज कर देता हूँ. टूल्स, ऑप्शंस, मल्टी प्रोवाइडर ऑन. आप जाएंगे सिमुलेशन पे, तो अब यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो आ जाएगा अकाउंट. या सो दैट मीन्स यू ऑलरेडी हैव. नेम नहीं चेंज करना, तो वो आप ऑलरेडी एक कर चुके हो. ये आपका ऑलरेडी है. आ गया. There is already SIM account with this name. Please choose another. सर आप फ्री हो गए तो हाँ जी. ये हमारा ऑलरेडी अकाउंट. हाँ, वो कह रहे हैं ऑलरेडी है ना, तो आप ऑलरेडी इसको कैंसिल कर दें. तो वो एक बन चुका है. अब आपके पास 2 सिम और वो 2 आ रहे हैं. Oh, SIM account 101 and SIM account the other one. Now you just select which one to trade. Yes.
ATM strategy again. Yes, sure. Strategy again. Yeah, give me 2 minutes. Head southwest toward Matheson Boulevard. So you recommend OPM to open? Yeah, start, not right now, not right Not now. right. You Yeah, gotta the wait. start, Yes, so that you don't lose too much money. correct, correct. Finally not end up with. तो आज का क्लास हो गया. Yeah, yeah, that's it. अगर आपने बैठना है, absolutely बैठे, no problem. 9:30 से पहले depends on traffic. Yeah, you want to come around at least 9, but sometimes I have some markup, so yeah, it's very difficult. It's almost like 1 hour. I just want to try something, you know. Yeah. Thank you, Jay. No problem. Gold secret. Idea is again evening में भी बैठे जब फारग हो, green background, buy limit, sell limit, buy limit, sell limit के stop loss क्या है, ATM इस तरह. तो जितना आप ज्यादा practice करेंगे उतना ही better है. We are not losing anything, right? No. Nobody is checking anything. Why my chat stopped working? What got up there? बाइक से थोड़ा मार्केट ऊपर नीचे जल्दी हो गया था, तो ऑल ऑफ अ सडन up in not even 1 second up like 10 points you made. Yeah, I've done that down. Yeah, I made few seconds. In few seconds. I just stopped it, just watching what's happening.
It's not going to happen. Two mid bands going down. Good. At least I saw. हाँ जी. देखिए. Right now अगर आपने कभी पहले तो ये हमेशा ये जो एरो आ जाए ना इसको लाइव कुछ नहीं करना. अच्छा. इसका मतलब आपका अकाउंट हो गया है थोड़ा सा मेरा निंजा फ्रीज हो गया. आपको रीस्टार्ट करनी पड़ेगी. आपकी रैम कितनी है इसमें? 16 गीग है. जी फिर ठीक है. नहीं आपकी रैम 8 है यार. 8 इनफ नहीं है. 16 ये रेट में मिनिमम 16 चाहिए इसको. तो इसी को अपडेट हाँ क्यों इसको आप क्योंकि प्रॉब्लम ये कि जितने चार्ट चल रहे हैं ना वो 16 गीग की रैम चाहिए उसको. तो या तो आप नंबर ऑफ चार्ट्स कम करें. डैनियल से कहें कि इसमें रैम कम है मेरे चार्ट्स कम कर दें या इसको चेंज कर दें. तो आप उनसे अभी देख लें या इसकी रैम. हाँ इसमें रैम. नो प्रॉब्लम ऑफ कोर्स. हाँ जी बैठे बैठे. नहीं देखें ये पहले ये करें. ये एरो अब यहाँ से बाई करेंगे ना. चार्ट ट्रेडर बाई. ये ऑर्डर लग गया. ये ऑर्डर पिक हो गया. अब यहाँ से दो चीजें होंगी या प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी. तो अब देखें ऊपर जा रही है आपके पैसे 1.1. अगर मेरे को निकलना है हाँ तो क्लोज दबा दें. ये क्लोज. तो निकल जा रहा है. वो वीडियो प्लीज देखें यार. यहाँ से करके मेरे को राइट क्लिक करना है 2 बार. नहीं राइट क्लिक नहीं करना. आपने उस एरिया में जाना है पहले. एक सेकंड वेट करें. देखें अब आप यहाँ पर बैकग्राउंड क्या है. बैकग्राउंड ग्रीन है तो राइट क्लिक इस एरिया के अंदर आए. आपकी रैम कितनी है? 16 ठीक है. अपना सही है. ये देखें यहाँ राइट क्लिक किया ये लिखा आ गया बाय लिमिट. हाँ उस एरिया में जाके प्राइस के साथ हो गए कर दिया. नहीं हो बिजी लगता. अच्छा. हाँ नो प्रॉब्लम नथिंग. हाँ जी सर. बेहतरीन बात आया. एरिया नहीं आया. हाँ मैं कह रहा मेरे कहना उत्ते जाना. हाँ जी हाँ ठीक है. उतों बाउंस करके उत्ते लेकिन पूरा टच किया उन्हें. ठीक है उतों लिया कुछ बाई किया. अच्छा. हाँ जी एक ट्रेड लिया था उसमें इकट्ठी बन गई 7-8. तो ठीक है अच्छी बात है ना. क्या करना ये की स्टेज ये 2600 इसको लूज करें क्योंकि उन्होंने आपका टारगेट बढ़ा देना है. तो एनुस ए आना चाहिए रियलाइज 450 मैक्सिमम. आपका नहीं आपका 915 है. हुनी जेडी ट्रेड ਲਈ ਸੀ ਨਾ. हाँ R1 वे भी इदा ही है. अब ठीक है कोई गल नहीं. तो तेरे लूज करें 450. हाँ लेकिन स्लो 6 बजे से पहले सॉरी 5 बजे से पहले. टेंशन बनाने की तैयारी पहली बार टेंशन लूज कर रहे हैं. देखें ये भी दिन आना था कि हमें लूज करने क्योंकि ना वो टारगेट बढ़ जाता है. सिर्फ ये होगा आपका टारगेट वो गोल्ड में जाएं 2 डाल दें लूज हो जाएंगे. सनी जी सनी भाई इनका पीए ना हो यार. पीए में नहीं लूज करना. ये है ना ये चीज उनको बता देंगे. पीएच नहीं लूज कर सकते. लाइफ ट्रेडिंग थ्रेशोल्ड है. ये हुए थे लूज करना. Okay. दोबारा R1 टच कर रही है जी. दोबारा एक दफा फिर. All right. So the word is called ATM, stands for Advanced Trade Management.
What is the meaning of it? That I will take a trade and I want computer to automatically set a TP and stop loss. So that's what it does for you. So now on your DOM or chart, you will see an ATM section. If you open it up, click on custom, you will see something called TP and SL or SL and TP. R1 तोड़ गया जी, नीचे आ गया. Okay, give me a second. All right. So here you can define at which point my trade should close automatically. So that is all. So let's say you in a mid-band trade, you say TP is, say stop loss is 12, for example, or 20. Doesn't matter what you put in ticks. So what this will do is, if you open a trade at 5,400, buy, it will exit automatically at 5,402 or 5 or 3 points, 53.97. It will put a bracket for you. So you can enter yourself and exit automatically. So whether price goes here, exit auto, whether price goes here, TP auto. So this is called an ATM. You can define whatever in that case. Yeah, you will be safe. But before you take a trade, make sure you can rename it. Call it 812, 820. You can rename. You can make as many. Custom, save it. I can call it. I don't want to say, so when I go to the market, so why the stop loss I do the minimum? Yes. So here, no. There's a rule for every trade. So it's not like you will know. You have to be realistic. At which point will it hit my stop loss? So for example, I go custom here. In this case, I will put a stop loss of 20 and maybe a TP of 12. Let me do a buy bid here. I open, and you see it open the bracket for me. If I'm going up, that's my profit. If I'm going down, that's my stop loss. See, right now I've made, like, I'm in a sim trade, $12, $13 with a micro. When I can trail it? You can trail it, 100% right. So click on it and trail it and lock it. There you go. Now my stop loss got moved. You can automatically, there's videos on the YouTube channel, tells you everything you can do automatic. There you go. No, I just dragged this. So let me do a buy bid here. So so I can move. This is through an ATM first. It's doing automatic. So please watch my videos. Every single thing I break down. How to put an ATM, how to auto trail, what into auto trail. So because of 4 years, we have narrowed down. Auto trailing is good. Let's say you take a mid-band trade. So you take a mid-band trade and you saw $100. Auto trail, what it does is it moves your stop loss to 0. So you cannot just go straight up to, like, as close to it. You can say, all right, in the market, I'm leaving $100. If it moves $112, it will lock $12. 125, it will lock 25. So it will keep coming behind you certain. So those videos are, if you go on super areas, top 5 videos are these. How to do this, and it's all there. Correct.
think we should be okay now for Mike. Good. take profit to final yearly Punch दिन 750. Maximum 750. 750. Okay. Mike. पांच कंपनियों के साथ हम एक्टिवली काम कर रहे हैं। एपेक्स नंबर 1 हमेशा 2 साल से थी। इसको मैं इसकी जो प्रायोरिटी है ना 5 पे ले आया, क्योंकि अगर किसी ने सबसे मुश्किल एग्जाम लेना है तो एपेक्स कर ले, क्योंकि इससे मुश्किल कोई है ही नहीं। उससे नीचे फिर मैं रेकमेंड इस वक्त कर रहा हूँ टेक प्रॉफिट एट नंबर 1, मे बी आफ्टर डू लेजेंड्स 3 एंड देन ये तो है ही सेपरेट। एंड देयर इज फ्यू मोर कंपनी। अगर जो प्रायोरिटी होगी ना, आपने एपेक्स किया हुआ है, 2 स्टेजेस होती हैं। So stages are, this is my priority, and you can do stages. Legends is 2 stages. You have to do EA and PA. So आपने इसका stage 1 EA करना है और PA करना है. Apex is 2. You have to do EA and PA. 2 stages. Bull longs is 2 stages, meaning you have to complete 2 rounds before you get your money. Take profit is 2 stages. Complete the 2 rounds. However, per dia is 1 stage. So मैं आपके लिए आज जो, क्योंकि आप दोबारा वापस आई हैं एपेक्स के बाद, तो आप क्योंकि एक्सपीरियंस हैं, आपको एंट्रीज आ गई हैं, डिसिप्लिन आ गया है, इन 2 पे फोकस कीजिएगा। मैं दोनों की प्राइस भी सब बता देता हूँ। और टेक प्रॉफिट का अगर आप लीजिएगा तो इनका लीजिएगा 50,000 या 25, दोनों की प्राइस कंपैरेटिवली है। मैं यहाँ लिखता हूँ फिर ताकि एटलीस्ट कंपैरिजन सीधा हो जाए। 50,000 आपको मिलेगा 120 यूएस का, और इसमें 3,000 होते हैं, तो इसका टारगेट इसमें 2,000 होते हैं। और आपने बनाने कितने हैं? 3,000, और आप लूज कितने कर सकती हैं? 2,000। सेम एपेक्स की तरह, ठीक है। 2 स्टेजेस हैं, लेकिन इसमें एक फायदा है। फायदा यह है कि अगर आप $120 अप फ्रंट दें, ये अकाउंट खोल लें और 30 दिनों में कंप्लीट कर लें, तो पीए की फीस नहीं है, ठीक है। तो अभी इन्होंने इसको थोड़ा सा शिफ्ट किया। एपेक्स लेजेंड क्या कहता है? $50 हमें ये के दें, 150 पीए के दें। एपेक्स क्या क्या कहता है? अभी एपेक्स की यही सेल लगी हुई है $15 की, लेकिन आगे वाला 130 का है। तो इनकी एपेक्स, इसकी डील है 50 150 की,
इस वक्त इसकी डील लगी हुई है $16 और 130 की, बुल नॉक्स की $16 और 150 की, और टेक प्रॉफिट की एक सिंगल डील लगी हुई है। अगर आप फेल कर जाएंगे तो 150 का है। तो अगर आपने 30 डेज में ये चैलेंज नहीं कंप्लीट किया तो आपको पीए की फीस पड़ेगी। तो ये इन्होंने प्रमोशन लगाई। प्रमोशन ये है 50,000 का अकाउंट लें, इसको 53 कर दें, 53 करना है। और सेम आइडिया जो आप बनाते जाएंगे वो थ्रेशोल्ड नहीं बढ़ता, वो ट्रेड ओवेट में आप देखती रहेंगे मेरा ड्रॉ डाउन क्या है, ये $2,000 2000 आप, हाँ एपेक्स का 25 है, बुल नॉक्स का 25 है, लेजेंड्स का भी 2000 है, टेक प्रॉफिट का 2000। मैं सिर्फ कंपेयर प्राइसेस पे कर रहा हूँ और इनका। तो अगर तो आपने थोड़ा लो कॉस्ट जाना है तो टेक प्रॉफिट पे जाएं। अगर $120 देते हैं, इनका 25,000 का अकाउंट है 105 का, तो 25,000 वाले में आपने करने हैं 1500 आपके पास है, और इसका एंड रिजल्ट होना चाहिए 26,500 और ये जीरो ना हो, तो ये 105 का है। तो ये कंपनी कहती है कि हमें 105 दें, अगर 30 दिनों में कंप्लीट कर दिया तो हम आपकी राउंड 2 की फीस माफ कर देंगे, राइट। तो दिस इज हाउ, ये आपको एक्सप्लेन कर, ये एक ऑप्शन है। हाँ हाँ 2 स्टेजेस हैं, ये टेक प्रॉफिट की 2 स्टेजेस हैं, 2 स्टेज। एक अगर वेव हो जाएगी, अगर आपने 1 महीने में पास कर लिया, मीनिंग क्योंकि इनके कोई भी अकाउंट उठा ले, पूरी कंपनी क्रॉस है, 20-25,000 वाला, 50 वाला, तो और ये 5 दिनों में करना है। एपेक्स अब देखें, लेजेंड क्या कहता है, आपको 5 दिनों में मिनिमम करना है, एपेक्स 1 दिन में करना है, बुलनॉक्स 1 दिन में कर सकते हैं, टेक प्रॉफिट आपको एटलीस्ट 5 दिन लगाने, 5 से पहले स्टेज 1 नहीं कंप्लीट होनी। तो ये है स्टेज 1 5 दिन है। तो अब लेजेंड्स के स्टेज 1 होती है 5 दिन में, दोबारा एपेक्स में 1 दिन में कर सकते हैं, बुलनॉक्स 1 दिन में कर सकते हैं, टेक प्रॉफिट 5 दिन। अच्छा, अभी यहाँ पर फिर टेक प्रॉफिट इसलिए नंबर 1 मेरी चॉइस इसलिए है, आपने कर लिया पास। एपेक्स की तरह ये रूल्स नहीं है, वो कहते हैं बेशक स्टेज 2 1 दिन में क्लियर कर लो, और हमें नहीं केयर मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, जो आपको उन्होंने अकाउंट दे दिया, ठीक है। तो आपकी सबसे सस्ता अकाउंट ये पड़ता है अगर आपको ट्रेडिंग आती है, अगर नहीं आती तो लेजेंड पे जाएं, पहले सीखें उधर के बाय कैसे है, सेल कैसे है, एंट्री एग्जिट स्टेज। अनलिमिटेड लेजेंड में, सॉरी देखिए मैं आप टेक प्रॉफिट पे मैं बात करता हूँ बाकियों, क्योंकि आपने स्टेज कम से जल्दी अपने पहुंचना है ना उधर। आप एक दफा आ गए स्टेज 2 पे, जैसे ही आपने अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया, उसमें भी जो टारगेट होता है कंप्लीट कर दिया, आपको रोज में पैसे देने शुरू हो जाएंगे। टारगेट डिफरेंट देखो, 25,000 का अकाउंट का टारगेट है $1,500, ਜਿਹੜਾ 50,000 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ $52,000 ਤੇ ਪੀਐਚ ਵੀ 1500 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਲੀ ਪੇ ਆਊਟ ਦੇਣਗੇ। आफ्टर 1500 रखा रहेगा ना, तो उस तो बाद जिन्ने मर्जी ਕੱਢ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 1000 ਕੱਢ ਲਓ, ਰੋਜ਼ ਦਾ 1000 ਕੱਢ ਲਓ, नो प्रॉब्लम, दे डोंट केयर। रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1500 ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ किन्ने ਕੱਢ सकते, $150, $200, $100 इदा निकल आता है रोज। आपका टेक प्रॉफिट की, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, स्टेज 1 आपने अब क्लियर कर लिया, चले 7 में कर लिया, 10 में कर लिया, 30 से पहले कर लिया, ठीक है, आपने कर लिया, आपको उन्होंने स्टेज 2 में भेज दिया। अब स्टेज 2 का जो टारगेट है, जिस तरह एपेक्स का क्या टारगेट होता है, आपको कहाँ पैसे मिलने होते हैं 2600 के बाद। ये भी ये कहते हैं कि एक दफा आप टारगेट पूरा कर लें, फिर आप डेली पैसे निकाल लें। स्टेज 2 का इसका 25,000 का अकाउंट का टारगेट 1500 है, और 50,000 का टारगेट 2,000। हाँ, जैसे ही आपने 2,000 क्रॉस किया, आप रोज के रोज जितने पैसे निकाल सकते हैं,
हाँ एग्जैक्टली देखिए अब मैं आपको क्योंकि आप एपेक्स से आ रही हैं, एपेक्स में क्या होता है, एपेक्स में आप स्टेज 1 करती हैं, लेट्स से 50,000 का काउंट किया, आपने 50,000 को टर्न किया 53,000 में, आपने 3,000 बनाया, आपको उन्होंने स्टेज 1 पास कर दिया। फिर आप स्टेज 2 में आई, आपका अकाउंट था 50,000, उन्होंने कहा कि आपको ने बनाने हैं $52,600, आपने 2,600 बनाने हैं ना एपेक्स की स्टेज 2 में, तो एपेक्स की स्टेज 2 में 26 बनना होता है, तो जैसे 26 बन गया आप क्वालिफाई हो जाती हैं पे आउट के लिए। नहीं उन्होंने 33 पे भी नहीं दिया था। नहीं, डिपेंड करता है कि वो आपकी डेली लिमिट क्या है, उनके रूल्स इतने सख्त हो गए हैं कि वो स्ट्रिक्ट बहुत हैं। अब इस वजह से एपेक्स ने कहा, एक 2 रूल नए निकाल दिए। एपेक्स ने कहा कि एक ट्रेड डालें, अगर आपका ट्रेड आपके पास लेट्स से 2600 का बफर है ना, आप ट्रेड में नुकसान में गए और 26 का 30% क्या बनता है, एक सेकेंड, 2600 अगर आपने $780 का नुकसान देख लिया ना एक ट्रेड के अंदर और बंद नहीं किया, ख्वाह वो प्राइस वापस आ जाए, आपका पे आउट डिनाई कर देंगे, क्योंकि वो ये नहीं चाह रहे कि लोग ट्रेड में बैठे, वो गिरते जाए गिरते जाए गिरते जाए 2000 तक गिर जाए, आपने कहा चला गया तो चला गया, और वहां से वो शूट बैक हुआ और आपने 1000 निकाल लिए, वो नहीं अलाउ करते आप। वो ये कहते हैं कि आपको स्टॉप लॉस लेना है, मैक्सिमम आपने 780 पे ट्रेड बंद करना है, अगर नहीं किया तो पे आउट डिनाई हो जाए। नहीं नहीं, लेकिन एक ट्रेड के अंदर नेगेटिव आप कितनी गई थी? लेकिन उन्होंने आपको एग्जैक्ट रीजन दी होगी नीचे, डिनाई की रीजन वो ईमेल में आती है कि आपने रिस्क प्रॉपर नहीं किया, आपने मिनिमम नहीं बनाया, आपने ज्यादा बना लिया, वो भी तो नहीं करना ना। तो वो 33 जब आपका बना, तो आपको जब डिनाई की रीजन आती है कि आपने कंसिस्टेंसी नहीं की, लॉस में भी प्रॉफिट में भी, तो वो मैं आपकी ईमेल देख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। सो इसमें ऐसी कोई हेडेक नहीं, आपने स्टेज 1 क्लियर कर लिया, स्टेज 2 एपेक्स की तरह कर लिया, तो जैसे ही आपने 50 का अकाउंट 52,000 नजर आ गया ना, उससे ऊपर जितने पैसे हैं 2000 से ऊपर शाम को ले लें, एवरी डे ले लें। तो ये यस, above 52,000, anything above you make 52,800 शाम को ले लें, एवरी डे ले लें। सो दे कॉल इट अ डेली पे आउट। सो आप आए, आप दिहाड़ी लगाएं, आपने कहा कि मेरे पास 5200 पड़ा रहे, उससे ऊपर 100 बनाया, 200 बनाया, 300 बनाया, 400 बनाया, 5000 बनाया। हमारा एक स्टूडेंट है उधर, न्यूज कर गया जिस दिन बॉन्ड थी ना, 2 टेक प्रॉफिट में बाय कर गया। अब वो न्यूज नहीं थी, मीनिंग के दे गेव हिम $3,800, they're like man because market shot up on MNQ, he 5 लॉट से वो 1900 बन गया उसका, and they gave him, they're like hey हाँ वो कुछ न्यूज कहते हैं जो आपने नहीं करनी, CPI, PPI, इंटरेस्ट रेट, लेकिन जो मीडियम एंड लो इम्पैक्ट है बेशक ट्रेड करो, नो प्रॉब्लम। सो टेक प्रॉफिट इस वक्त नंबर 1 जा रहा है पे आउट्स के अंदर, लेकिन उनका कैच क्या है? कैच ही है पहले पैसे पकड़ लेते हैं आपसे, क्योंकि जिसने 50 का फेल करना है उसने 105 का भी फेल कर देना है, तो वो कहते हैं पैसे तो पकड़ो ना, लोग 105 फेल करें, राइट। नाउ माय फेवरेट, मैं क्योंकि जो जैसे जैसे लोगों की स्टेजेस इंप्रूव हो रही हैं कि मुझे डिसिप्लिन आ गया, मुझे पेशेंस आ गया, मैं ट्रेड डाल सकता हूँ। सो व्हाट डू? यू गो विद अ कंपनी कॉल्ड पर्डिया। हाँ जी सर। हाँ देख, अकाउंट ते ब्लो होएगा ਜਦੋਂ 2000 लूज होएगा ना, हाँ फिर ऐड करो, वापस करो। देखो ऐदा नहीं ਹੁੰਦਾ कि ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰੋਗੇ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 52000 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਇਆ और 100 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 52 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ 500 ਤੇ ਆ ਗਏ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟ पे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਪੀਏ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਪੀਏ ਚ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਪੀਏ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2000 ਲੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ, 2500 ਲੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
फिर ये चाहोगे, फिर वो 2 स्टेजेस ने ना, फिर दोबारा ये चाहोगे। इधर तक क्लियर है जी? टेक प्रॉफिट का कोई क्वेश्चन हो? ठीक है, नो प्रॉब्लम। यस, इसमें आपको पास लाइव ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड है टेक प्रॉफिट के राउंड 2 में ऑलरेडी। आर यू इज ओके? 1140, ओके गुड। अब आ जाता है पर्डिया कैपिटल। थोड़े से एडवांस यूजर्स के लिए जो फील करते हैं कि मैंने लाइव नहीं जाना, अभी लाइव के पास मेरा कैपिटल अभी नहीं है, लेकिन मैंने एज क्लोज टू लाइव देखना है कि लाइव के अंदर क्या है। अब आपका अकाउंट जो मोस्ट एक्सपेंसिव अकाउंट है ना, वो है $750 का। इस सस्ते भी हैं इसके अंदर, ये सबसे एक्सपेंसिव है इनका अकाउंट 750 का। इसके अंदर अकाउंट में, सॉरी आई फॉरगॉट, यू अंडरस्टैंड हिंदी राइट? ओके ओके, आई डिडंट वांट टू स्विच टू यस। ये पर्डिया का अकाउंट है, ये लाइव अकाउंट है जी, मीनिंग कि इसके अंदर स्टेज 1 है और कोई मल्टी स्टेजेस नहीं है कि आपने ये करना है, ये करना है, ऐसे नहीं करना। आपने उस दिन लिया है, इसकी सिर्फ और सिर्फ 3 कंडीशंस है। मैं यहाँ पर एवरी टाइम की 5 बॉक्सेस बनाऊंगा। एक ये कंडीशन है एंड आई विल मेक अनदर बॉक्स। टोटल 3 कंडीशंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो कंडीशन क्या है? मेक 3000, मैक्स लॉस 3000, 5 days $200 से ज्यादा हूं और 10 दिन टोटल मिनिमम 10 दिन प्लस हूं और 5वां एंड ऑफ डे है। अब इसको मैं थोड़ा एलैबोरेट आपके लिए कर देता हूं। आपका आप देंगे जी उनको $750, ठीक है? आपका इंस्टेंट अकाउंट खुल जाता है। उस अकाउंट के अंदर ये 2 नंबर लिखे आएंगे, $1,00,000 और $3,000। जिस तरह ट्रेडोवेट में होता है, जिस तरह एपेक्स में होता है, लेजेंड में होता है, आपका अकाउंट खुल गया। वो ये चाह रहे हैं आपसे, नंबर 1 प्लीज इसमें टाइम की लिमिट नहीं है, इनफिनिट टाइम है आपको दे रहे हैं। आपने 750 दिए हैं, वो कहते हैं 10 साल ले लें, पैसे ना जाया करें। तो टाइम इज अनलिमिटेड एंड मनी मिनिमम, देयर इज नो dollar amount. You can make as low as $1. You can make as high as $3,000, $5,000. They don't ask you क्या कर रहे हैं। आप डॉलर कॉस्ट एवरेज करना चाहते हैं, आप 5 लॉट लेना चाहते हैं, डजंट मैटर। सब कुछ उन्होंने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है, बिकॉज आपको ट्रेडिंग आ गई है। DCA allowed, so the word is DCA, yes. Number of trades are unlimited trades. And you can do mini, micro, average, doesn't matter what you do, just like a real account. हाँ जी, DCA means dollar cost average. होता ये है कि आपने एक ट्रेड ऊपर लिया, लेट्स से एक्सपेक्टेड हाई पे, प्राइस और ऊपर चली गई, आपने एक और सेल कर दिया, 2 सेल हो गए, एवरेज प्राइस नीचे आ गई, इट्स कॉल्ड DCA, डॉलर कॉस्ट एवरेज। अब आपने ये अकाउंट खरीदा, आपने स्टार्ट किया, आपने कहा मैंने पहला ट्रेड डाला, दूसरा डाला, 5 दिन ऐसे होने चाहिए, बेशक 1000 में से हो, 10 साल ले लें, मैं 1 साल लेते हैं, 5 दिन ऐसे होने चाहिए जिसमें एटलीस्ट $200 बनाओ, बस।
आपने आज ये अकाउंट खोला और इसमें $5 ट्रेड किया, सिर्फ $5 ट्रेड किया, इन एक माइक्रो लिया, MES लिया और खत्म कर दिया, $5 का ट्रेड लगा। ऑफ कोर्स थ्रेशोल्ड आपका पूरा था, उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया, आपका 3000 मैक्स लगा हुआ है। रिमेंबर, आपका एक ट्रेडिंग डे काउंट हो गया, 10 दिन ट्रेडिंग करनी थी मिनिमम, बेशक 20 करें, 30 करें, 40 करें, 50 करें, जितना मर्जी, लेकिन मिनिमम 10 ये कंसेक्यूटिव नहीं है। ये इसका ये मतलब नहीं है आपने आज ट्रेड किया, कल भी करना है, परसों भी करना है, जब मर्जी ट्रेड करें। मैं बार बार आके कहता हूं कि पता नहीं, मैं लोगों को नहीं समझ पाता कि जब पीए आ जाते हैं, ख्वा एपेक्स का पीओ, बुलनॉक्स का पीओ, लेजेंड्स का, आई डोंट नो पीए में रश क्यों होता है। एक दफा आपने फीस दे दी है, वो बेशक साल पढ़ रहे, आपको काटता तो नहीं है ना। मैं क्या कह रहे, नहीं, वन टाइम होती है सर। हर लेजेंड 150 लेता है वन टाइम, एपेक्स 130 लेता है, बुलनॉक्स 150। मैं बुलनॉक्स ट्रेड कर रहा हूँ 60 दिनों से, 60 दिनों में मैंने 28 दिन ट्रेड किया है। और वैसे क्योंकि कल मेरा दूसरा पे आउट आ जाएगा, मैंने पहले 10 दिन ट्रेड किया, क्योंकि 10 दिन ट्रेड करना होता है। पहले मैंने 4100 बनाया, उसमें से मैंने 1500 खींच लिया। कल मेरे 10 दिन, आज मैंने जो ट्रेड डाला है उसमें 10 दिन मैंने $50 या $60 का ट्रेड डाला है, मेरे 10 दिन फिर पूरे हो गए। कल मैं फिर रिक्वेस्ट कर दूंगा कि मेरा पे आउट फिर 1500 का भेज दें। मुझे तो कोई रश नहीं होता, मैंने एक दफा उनको 148 पे कर दिया, मुझे तो नहीं है कि मैंने लेना ही, जब अपॉर्चुनिटी अच्छी आई ट्रेड डाल लिया और वहां पर ऐड, क्योंकि पीए में कोई फीस नहीं है, एक दफा आपने फीस पे कर दी तो फिनिश हो गया। ऑलराइट, तो ये भी पीए ही है ना आपका, लाइफ पीए है, फॉर लाइफ है, कोई मंथली फीस नहीं है। आपने 750 दिया, आपको 3000 मिल गया। नेक्स्ट डे आप आए, आपने $5 का लॉस किया। मैं इतना आपको माइन्यूट लेके चल रहा हूं क्योंकि फॉर गॉड्स सेक यार, आप इसको 5 MES से ज्यादा ना जाएं, इसमें इसके अंदर जान नहीं है। $3000 है, लोग 2 मिनी से घुसे होते हैं। मैं चलो ES तो मेक सेंस करता हूं, आपने 30 डेज में करना है, आपने कहा जी करें यार, फिनिश करें टारगेट। जब आप राउंड 2 में हो, जब आप पीए में हो, स्पीड नीचे ले आए, दैट्स इट। वो तो नहीं 5 मिनी। अब मैं आपको इसका मैथ बताता हूं, मैंने अपने कल स्टेटस पे लगाया था कि अगर आपके पास 1500 का अकाउंट है, मैक्सिमम 2 माइक्रो, मैक्सिमम माइक्रो बात कर रहा हूं। एक माइक्रो कितने का होता है? $5 का। एक मिनी कितना होता है? $50 का। चलें, अब आप इसका मैथ करें। आपके अकाउंट में है $1500, लेट्स से एपेक्स का पीए है, आपके पास 2000 वाला है, राइट। अब देखें कि जिस हिसाब से आजकल मार्केट मूव हो रही है, 1500 कितनी जल्दी एवेपोरेट हो सकता है, सिर्फ देखना है। ये 1500 डिवाइडेड बाय 50, मार्केट 30 पॉइंट मूव कर गई ना आपके खिलाफ, उसका लिखा आएगा सक्सेसफुली लिक्विडेटेड। पता नहीं सक्सेसफुली क्यों कहते हैं वर्ड, मुझे ये नहीं, भाई ठीक है हो गया लिक्विडेट, सक्सेसफुली जरूर कहना। तो आपके अगेंस्ट मार्केट गई 30 पॉइंट, ES पे अकाउंट चला गया। आपके पास 3000 का अकाउंट है, मुझे सिर्फ ये बताएं, अपने 3000 डालेंगे GFF में, AMP में, ऐसे ही ट्रेड करेंगे? मुझे तो नहीं लगता। तो आप माइक्रोस जाएंगे कि थोड़ा थोड़ा छोटा। अब $50 का अकाउंट है, अगर 3000 है डिवाइडेड बाय 50, 60 पॉइंट मार्केट खिलाफ चली गई ना आपके अकाउंट बैलेंस खत्म हो जाना, जीरो हो जाना। तो आपके पास रूम सिर्फ 60 पॉइंट्स का है, जस्ट सेइंग। सो मेरी रिकमेंडेशन है, जब भी पर्डिया करें 3000 वाला, मैक्सिमम 5 माइक्रो से, क्योंकि उसके 5 माइक्रो की क्या वैल्यू? $25। आप रिड्यूस कर दिया रिस्क आधा पे। लॉट साइज है ना 5 माइक्रो। मैं लोगों को देख रहा हूं 1 या 2 माइक्रो से आज कर रहे थे, वो जितनी स्पीड चल रही थी। आपने कहीं से भी 1 माइक्रो उठा लिया ना, वो एकदम $35 आ गए, 7 पॉइंट मूव हो गई एकदम, जिस तेजी से आपको लगा यहां ES डाल दें, लिखा आएगा सक्सेसफुली लिक्विडेटेड, फिर आपके 750 जाएंगे, पता नहीं
To me, this is a like huge amount of money, in my opinion. So some users don't care. It's up to them. 5 माइक्रो पे आप खेलें. 5 माइक्रो की वैल्यू क्या है? $25, क्योंकि $5 का एक. तो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है, आपके पास कितने पॉइंट्स हैं? 3000 डिवाइडेड बाय 25. यू कैन रियलिस्टिकली लिव, लेट्स से R2 पे बेचा है, R3 पे बेचा है. एक मैं क्वेश्चन देता हूं, R2 पे 5 माइक्रो डाले हैं यार, 120 पॉइंट तो नहीं चढ़ेगी ना यार. अगर S3 पे बेचा है और 5 माइक्रो डाल दिए हैं, तो वहां से 120 का डिस्टेंस है आपके पास. तो आपके पास हेल्थी अमाउंट ऑफ रूम है प्ले करने का. होता ये S1 पे आया हुआ है, फुल मिनी डाला हुआ है, लो जी अकाउंट गिरना शुरू होता है. S1 से S2, S2 से S3, अकाउंट लिक्विडेट. नहीं, वो लगा होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्यों माइक्रो नहीं लगाना, आपको मिनी नहीं लगाना इसमें. प्लीज, हर पीए में अगर आपके पास टेक प्रॉफिट का भी पीए है, तो 3000 की वैल्यू है ना यार, कितनी गुंजाइश है उसके अंदर मूव करने में. ले क्योंकि ये होता है कि अगर आपने बहुत ज्यादा लॉट बड़े डाल दिए, तो इतनी जल्दी. एक दिन मैं बैठा हूं, यहाँ किसी ने लगाया हुआ $1500 में 4 लॉट. मैं शेक हो जाता हूँ, बिकॉज 1500 का मतलब है कि मार्केट ने 8 पॉइंट आपके खिलाफ गई ना, अकाउंट चला जाना है. और आपने 4 लॉट फुल डाले हुए हैं, क्योंकि जल्दी पैसे बनेंगे ना आपके. अगेन मैं अलाउ करता हूँ ईए में जो मर्जी करें, प्लीज पीए में ना करें ये. So anyway, coming back to it. तो 5 माइक्रो से ज्यादा 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, इनकी कोई लिमिट नहीं है, आपने इतना करना है. बहुत अच्छी मार्केट आ जाए ना जिस दिन, लेट्स से कि ऐसे दिन आते हैं प्राइस एक्सपेक्टेड लो पे आ जाती है, वहां से 5 माइक्रो डाल दी. अब आप कहते हैं मैंने 200 बनाना है ना, 200 भी तो किसी दिन बनाना है ना. तो 200 बनाने के लिए आपको कितने डॉलर चाहिए? एक मैथ करते हैं. अगर 5 माइक्रो से करेंगे, आपको 8 पॉइंट चाहिए. इट्स नॉट डिफिकल्ट टुडे, नॉट डिफिकल्ट टू मेक विद 5 माइक्रोस. 3 माइक्रो में काम हो जाता है. एनीवे, तो आपने -5 लिए, -5 लिए, आपका ट्रेडिंग नंबर 2 काउंट हो गया. आपको 10 दिन ऐसे चाहिए जिस दिन आपने ट्रेड डाला हो, और आपको ऐसे नंबर्स चाहिए. 200 वाले सिर्फ 5 दिन चाहिए. ये 100 में से हो जाए, ये 200 में से हो जाए, फिर 500 में से हो. ये नहीं है कि आपको 5 दिन कंसिस्टेंट चलना है. आज किया, मौका मिला, कल नहीं मौका मिला, तो मैंने सिर्फ $1 का ट्रेड डाला ताकि मेरी हाजिरी लग जाए. तो ये पर्डिया का है. इसमें अगर आपके पास क्वेश्चन है तो मैं, तो जैसे ही अब मैं आपको बताऊंगा पे आउट कहां से मिलने. आपने ये अकाउंट 1 लाख से 1.3 कर लिया, आप उनसे 3000 मांग सकती हैं. आपने कहा कि मैंने 750 आपको दिए थे, अकाउंट खत्म हो जाएगा, तो आप फिर बैठ जाएं दोबारा. या उनसे कहें कि ये 3000 लो और मेरा अकाउंट खोल दो, वो उसको लाइव अकाउंट कर देते हैं. आपको सीआरए को कुछ नहीं बताना, आपको ब्रोकर, आपको उसको, इस अकाउंट को कहते हैं सब अकाउंट. अकाउंट अमेरिका में खुलेगा, आपके नाम का खुलेगा, ब्रोकर उनका होगा. आपका 3000 का अकाउंट खुला है, उस लाइव अकाउंट है. जिस तरह आप जीएफएफ करते हैं, एएमपी करते हैं, यू कैन गो नट्स ऑन दिस अकाउंट, नो प्रॉब्लम. रोज का 1000 बनाए, 200 बनाए, 100 बनाए, दे डोंट केयर, दे विल पे यू एवरी डे एज लॉन्ग एज के वहां 3, और वो 3000 भी जब दिल किया निकाल लिया अगर आपको. लेकिन अकाउंट आप क्या कर सकते हैं, उसमें से 2000 निकाल लें, 1000 निकाल लें, 750 निकाल लें. आप कहें जी मैंने जितने दिए थे ये मुझे वापस कर दो, मेरा अकाउंट खुल जाए. जी 2350 खड़े हैं, आपने उस दिन 485 दिया है. जब आप 2000 बना लेंगे, आप उनसे कहो यार मुझे 485 दे दो, आपके पैसे जेब में आ गए, 1500 के अकाउंट लाइव खुला हुआ है. वो अब आपका प्रिंसिपल की स्ट्रेस तो है ही नहीं है. सो ये है जी सारा आपका पर डे. इसमें अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आई कैन. No, these are all trading accounts. These are Perdia, Apex, Legends. These are no. It's Apex की सिस्टर है. पहले जिस तरह Apex होता था ना, अब बुलनॉक्स वाले Apex वाले हैं. जिस तरह नाइसली छोटी सी कंपनी थी, पे भी कर रहे थे, अकाउंट भी सस्ते थे, तो बुलनॉक्स सेकंड बेस्ट है मेरी उसके बाद, क्योंकि लेजेंड्स बिगिनर्स के लिए बहुत ग्रेट है.
तो अगर लाइव जाना है तो हमेशा मैं एक ऑप्शन देता हूं, कोई ट्रेडिंग नहीं आती, लेजेंड्स करें 1 2 3 4 5 6 जब तक आपको सीधे नहीं हो जाएंगे। थोड़ा सा आप सीधे होने शुरू हुए, आप चले जाओ टेक प्रॉफिट में, स्टेज 2 पे थोड़ा सा बेटर है उससे, आप कॉस्टली है ना, टेक प्रॉफिट से निकले पर्डिया में चले गए आप, लेकिन इस वजह से नहीं कि आपको यहाँ कोई ट्रेडिंग आसान हो जानी है ट्रेडिंग उतनी ही मुश्किल है जितनी लेजेंड के अंदर है, सिर्फ टेक प्रॉफिट इसमें रूल्स आसान है। और फिर आखिर में आए, आपने कहा यार कि अब मुझे ना अपना रिस्क मैनेजमेंट आ गई है, कैपिटल मैनेजमेंट आ गई है, ट्रेड मैनेज डिसिप्लिन मेरा ठीक हो गया, क्योंकि मैं कहता हूँ एंड पे आप ही को ठीक होना है, मार्केट ने ठीक नहीं होना। मार्केट ने एवरी डे ट्रम्प के साथ ना, हम किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। मैं तो एवरी डे यहाँ बैठता हूँ, अब रात को उसने कहा कि उसको फायर नहीं करना, मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चली गई। आज उसने कहा जी चाइना के साथ ठीक है, मार्केट दोबारा ऊपर चली गई। कल ये कहेगा नहीं चाइना एनवीडिया कल फिर नीचे। तो हम आप ना लॉन्ग टर्म लॉन्ग कर सकते हैं ना लॉन्ग टर्म शॉर्ट कर सकते हैं, इतनी अनप्रेडिक्टेबल इस वक्त चल रहा है, विच इज ओके, हमारा कोई केयर नहीं है। एवरी डे हम आते हैं, इस एरिया से लॉन्ग कर लिया, इस एरिया से। अब मैं किसका वेट कर रहा हूँ, रात के 12 तक वेट करता रहूंगा 19,450, वहां ऑर्डर लगा जाऊंगा। ऐसे नहीं है मैंने वहां बैठना है, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ 19,450 का प्राइस वहां आएगी, वहां मेरा स्टॉप लॉस लगा होगा, वहां मेरा टीपी लगा होगा, और फिर दो ही चीजें होंगी, या वो क्रॉस करके हिट कर गया है या फिर वो मुझे प्रॉफिट दे गया। लेकिन मेरा नंबर जो है वो इस वक्त चल रहा है 19,450 का वेट कर रहा हूं मैं ईएस का, सॉरी, और अगला एरिया हमारा क्या था ईएस का 5550। ये ईएस पे आ गया तो मैं वहां से सेल कर दूं। तो मैं तो ऐसे ट्रेड करता हूं जी, एवरी डे मुझे नंबर्स याद है कि मैंने कहा यार ये रेंज है, यहाँ से सेल करूंगा, यहाँ से बाई करूंगा। अगर इधर चले गए, और कई दिन है यहाँ बैठा होता हूँ 2-2 बजे तक कोई ट्रेड नहीं आता। मैं उसमें नैस्डैक में लगाता हूँ 35 पॉइंट्स। देखें ये नंबर लिया, एरियाज हैं हमारे, अगर आप देखें नैस्डैक का एरिया इस वक्त एक्सपेक्टेड हाई में लिखा हुआ है 19,400 टू 19,480। नैस्डैक का एक्सपेक्टेड हाई देखें जी, तो उसमें मैं 450 पे जाके एवरेज लगाऊंगा और 480 से 30 पॉइंट ऊपर जाके अपना स्टॉप लॉस लगा दूं। ईएस में तो मैं 5 पॉइंट, तो 65 प्लस 5 तो 71 पे जाके मैं अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा कि अगर ईएस इतनी गिरी ऊपर 65 से 5 पॉइंट चढ़ गई ऊपर और आई एम गेटिंग आउट, क्योंकि मुझे पता है कि 5 माइक। लेकिन ये काम मैंने 4.5 नहीं करना, पता लगे आपने 4.5 किया, मार्केट वापस ही ना उतरे, 5 बजे अकाउंट बंद हो जाए। तो अगर इतनी क्लोज मार्केट क्लोज के पास, कई दफा होता है ये काम होता है 6 बजे, आप वहां से सेल कर दें। तो अब पर्डिया को फाइनल क्वेश्चन हूं कि आपने क्या नंबर 1 अगेन बात यह है, इसमें एंड ऑफ डे है। एंड ऑफ डे क्या होता है, देखिए एपेक्स में जो सबसे मुश्किल रूल था ना, और जो लेजेंड में भी है, एपेक्स में भी है, बुलनॉक्स में भी है, आपने ट्रेड डाला, ट्रेड चला गया 5 पॉइंट ऊपर, आपको नजर आया $250, वापस आ गई प्राइस और वहां नजर आया $100, आपने कर दिया क्लोज, उन्होंने 150 आपसे काट लिया। इसमें ये मसला नहीं है, ये लाइव अकाउंट की तरह है। आपको अच्छे, मुझे 15 भी नजर आए तो मैं बंद कर देता हूं, मुझे 50 नजर आए तो ये नहीं होता कि मैंने 50 देखे 15 पे बंद किया तो मुझे 15 मिलेंगे, यानी कि 35 काटे जाएंगे। तो पर्डिया कैपिटल का इनका छोटा वर्जन भी है, मेरा ख्याल है छोटा वर्जन 450 का है, बड़ा वर्जन एक उससे भी छोटा है, लेकिन वो उसकी फिर वैल्यू बहुत कम है, 750 का लॉस है इसके अंदर। 19,450
और अगर अभी तो गिर रही है, एक सेकंड नीचे वाली साइड, फिर मैं वेट करूंगा जी डेफिनेटली 18,150 तक का। देखें 19,450 से 18,000 एक्सपेक्टेड लो, अगर इधर आई तो ये बाय करेंगे, अगर उधर गई तो वो सेल करेंगे। तो ये एवरीडे होता है, और थैंक्स टू मिस्टर ट्रम्प ये हो जाता है रोज। कल जो मार्केट खुली, मैं तो बाय चांस ही वहां बैठा था, मैं कहा यार ये तो एक्सट्रीम हाई आ गई, क्योंकि मैं और माजिद भाई देखते हैं गैप कितना आया, हम सिर्फ गैप देखते रहते हैं, क्योंकि मार्केट बंद हुई यहां और खुली यहां। व्हाट हैपेंड इन दिस 1 आवर? पता लगा कि ट्रम्प साहब ओवल ऑफिस में कहते हैं कि मैंने उसको फायर नहीं करना, बस। और ये डिलिबरेट काम है ना। देखें यार, ये इनसाइड ट्रेडर नहीं है तो और क्या है कि यार उन्होंने अपने बडीज को कह दिया कि हम सारे लॉन्ग में चले जाओ, मैंने स्टेटमेंट बोलनी है, 6 बजे मार्केट खुलनी है। तो आई विश वी हैड फ्रेंड्स लाइक ट्रम्प। हाँ जी, सर आ रही है हार, देखो गिर रही है ना। हुण साडा गैप खुलिया सी 53, गैप इत्थे बंद हो गया। नहीं, मार्केट कल शामी 6 बजे 5 बजे बंद कितने हुई सी? मेरा ख्याल है गैप फिल हो गया है। एक सेकंड सर, मैं कनेक्ट कर लूं अपना। आई थिंक गैप इज फिल्ड। पढ़ दिया MES। नहीं सर, गैप बहुत नीचे, अभी 50 पॉइंट और है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो, पीपी ते गैप फिल देख सर, लेकिन आ गई 50 पॉइंट रह गई। गैप फिल करके इधरों मैं लॉन्ग करूंगा, पीपी तो लॉन्ग करूंगा, लेकिन फंडेड अकाउंट नहीं, FTMO, क्यों कि वो लॉन्ग टर्म है। अच्छा, मैं इथों R2 तो सेल की सी आज मॉर्निंग, मैं हुणी उन्होंने प्रॉफिट मेरा निकला है। It should be, let me fix 270. There's a problem with this. It should be 250, sorry, 18,250. That got fixed now. अपने एरियाज रिफ्रेश करें, एक्सपेक्टेड लो फिक्स हो गया है। देयर वाज अ टाइपो, इट शुड बी 250 टू बहुत ऊपर है, बेस ऊपर, प्रेशर ऊपर। तो गैप फिल होने के लिए ये पता कहां तक जा सकती है, अगर टेक्निकली गिरे S2 गुड सपोर्ट बनेगी वैसे ES की, क्योंकि गिर रही है ना, तो S2 विल बी ए गुड सपोर्ट, शुड बी, बिकॉज हाँ वो तो नीचे का एरो है ना, वो गिरती आ रही है। तो ये काम S2 पे जाके आपका PP पे जाके आपका वो हो जाएगा गैप फिल कल की मार्केट का। नहीं, वो था नैस्डैक का। मैं आपके ये दो नंबर दिए हैं, 19,450 पे आपने लॉन्ग जाना है, शॉर्ट जाना है, यस। नहीं, अभी वापस जितनी गिरनी थी गिर चुकी है, 87 से बाउंस कर रही है। सिर्फ और सिर्फ वेट हो रहा है मुझे S2 का। S2 शुड एक्ट लाइक ए गुड सपोर्ट, और नैस्डैक की भी, क्योंकि गैप जो है ना कल का, वो सारे S2 के करीब हैं या PP के करीब हैं। गुड पॉइंट। पिवट पॉइंट जहाँ लिखा है ना 60 मिनट पे, वो कल वहां मार्केट बंद हुई थी, कल उसके इर्द गिर्द मार्केट कल बंद हुई थी। देखें, अगर आप 60 मिनट के चार्ट पे जाएं और 22 अप्रैल के शाम को देख लें आप,
देखें वो जो एक रेड कैंडल है ना 5 बजे वाली, नीचे 17 लिखा होगा, ये आपको पता है कि ये 5 बजे वाली कैंडल थी। नीचे टाइम चल रहे हैं, ठीक है। तो S2 के करीब हमारी कल मार्केट बंद हुई थी। नहीं 17 नीचे 17 लिखा आना चाहिए। नीचे अपना माउस लेके जाए, नीचे जो डेट जा रही है 22 अप्रैल 23 अप्रैल। तो यहां से मैं उसको S2 को जज कर रहा हूं कि मेरे हिसाब से S2 पे मैं रिस्क लूंगा आज। S2 कल का क्लोज है, इवन दो बेस इज अप, प्रेशर इज अप, लेकिन S2 शुड वर्क लाइक ए गुड सपोर्ट। तो क्योंकि अब चीजें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं तो S2 पे लॉन्ग बनता है, माय ओपिनियन। अभी तो ये वहां चली गई है तकरीबन जहां कल ओपन हुए थे। है नहीं, यहां से लॉन्ग बनता है जी, S2 से यहां से लॉन्ग बनता है। एक्चुअली जो पिवट पॉइंट है ना आपका, जो लोअर बैंड S1 का है वो 510 है और पिवट पॉइंट आपका बन रहा है 490। सो ऑल ऑफ दिस इज अ गुड सपोर्ट बिकॉज मल्टी लास्ट कैंडल्स भी सारी वहीं खड़ी हैं, पिवट भी वहीं खड़ा है, 60 मिनट का मिड बैंड भी वहीं पर खड़ा हुआ है। तो एवरीथिंग मल्टी सपोर्ट वहां बन रही है आपको 60 मिनट में। टेक केयर जी। अराउंड 50, एक सेकंड मैंने बंद कर दिया। हाँ जी, पिवट्स के इर्द गिर्द। हाँ जी, नहीं, जब प्राइस उधर जाएगी, प्राइस उधर जानी चाहिए ना। ये हम अपना नंबर निकालेंगे फॉर टुडे, राइट? ये काला है, शाम को आए, डजंट मैटर, ये गुड सपोर्ट है। गुड सपोर्ट है फॉर नेक्स्ट डे। नहीं, कल सुबह 9 बजे नई सपोर्ट बन जाएगी, नए रेजिस्टेंस बन जाएंगे। ये आज किस डे? आज के रात के, कल सुबह 9:30 तक, सुबह 9:30 बजे तक ये नेक्स्ट ये गुड सपोर्ट ये 24 आवर के लिए है। होगा ये कंप्यूटर सुबह 9 बजे नई कैलकुलेशन शुरू कर देगा। कंप्यूटर ने देखना है मेरा वॉल्यूम कितना था, कितने लोगों ने बाय किया, कितने ने सेल किया, वैल्यू एरिया क्या था, कोई न्यूज़ है, कोई अर्निंग्स है, और उसने फिर एक कुछ नंबर प्रिंट करने हैं, राइट। अभी फिर आ गई मैं तो सर ये कैसे मुझे पता चलेगा ये लॉन्ग बनेगी या शॉर्ट बनेगी? ये रेड एरिया में इसलिए नहीं, सपोर्ट एस ऊपर से गिर रही है ना, तो सपोर्ट एस, सपोर्ट है तो लॉन्ग बनेगी, सपोर्ट है तो लॉन्ग करेगी, रेजिस्टेंस है तो शॉर्ट बनेगी। अच्छा ये नीचे है ना, इसलिए सपोर्ट है, ऊपर से तो गिरेगी ना। और अगर नीचे से आ रही हो, लेट्स से S3 से आ रही हो, S1 क्या बनेगी? रेजिस्टेंस, क्योंकि डिपेंड करता है प्राइस की डायरेक्शन क्या है।
तो मैं अपने ऐप मेरी रेडी है, जब प्राइस गिरेगी एफटीएमओ में फ़ायदा ये हमें होता है, जो लोग इससे भी अगला अकाउंट करते हैं कि हम ट्रेड को 5 बजे बंद करने की स्ट्रेस नहीं होती। तो जब S2 की तरफ आ जाएगी तो हम वहाँ से सारे बाय कर लेंगे। सर आपने ऐप बताया था ना वो ट्रेड व्यू, राइट? ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू। लेकिन अगर आपके पास पर्डिया है ना, या लेजेंड है या एपेक्स है, तो डाउनलोड करें ट्रेडोवेट, वो फ्री की है। ट्रेडिंग व्यू आपसे $12 महीने के लेंगे, तो ट्रेडोवेट फ्री है। सर कौन सा वाला जिसमें ये टी बना हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ट्रेडोवेट। सर इसे रजिस्टर करना पड़ेगा? नहीं नहीं, आपके पास अभी फंडेड अकाउंट कौन सा है? मेरे पास एपेक्स है। तो एपेक्स का यूज़र नेम पासवर्ड लें एपेक्स की वेबसाइट से, और वहाँ क्लिक करें, उस पे ऊपर साइन इन कर दूं? साइन इन करें और एपेक्स का यूज़र नेम पासवर्ड डालें। नो, Thank you, sir. नो।
टेक केयर। सर एपेक्स के साथ नहीं ये लॉगिन हो रहा। एक से नहीं, एपेक्स के अंदर जाएं, राइट पे उन्होंने आपको एपेक्स का नंबर, ट्रेडेवेट का यूजर नेम पासवर्ड दिया हुआ उनकी वेबसाइट पे, उससे लॉगिन करना है। नहीं, बेस अप है, प्रेशर अप है, लॉन्ग कीजिएगा जो भी करना है, लेकिन बेस्ट होगा अगर S2 से लॉन्ग करें, ज्यादा बनेंगे। क्योंकि ऑलमोस्ट R2 से गिर रही है, तो S2 पे उसको थोड़ा ब्रेक मारनी चाहिए मेरे हिसाब से। Okay, what was the questions? EA 1 day, PA 8 days. Minimum. PA max 30% of target. Start live trading market to play नहीं, सिमुलेशन। वैसे ये 20 वो जो 16 कितना लगाया उन्होंने, 3 लाख का अकाउंट एपेक्स ने लगाया है
$60 का, जो उसमें 7500 थ्रेशोल्ड है ना, जब 90% आती है ना, रश जाता है 3 लाख के अकाउंट पे, क्योंकि उसका पे आउट बड़ा अच्छा है। उसका ये पे आउट है $3500, लेकिन हमने बनाने 20,000 है। जब तक आप 27,500 नहीं बनाएंगे ना, तब आपको जाके 3500 मिलना है। बंदा रह जाता है। इट इज ए टफ क्लाइंब। आप कहाँ से बनाएंगे जी 20,000 इन 1 मंथ? ज्यादा 2 मंथ करना पड़ेगा, और 2 मंथ 40 दिन का डिसिप्लिन, बड़े से बड़ा ट्रेडर भी हिल जाता है। तो सर हाँ, लेकिन ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। $25 ਦਾ ਅਗਰ ਮਾਈਕਰੋ ਲਵੇ 1500 ਵਾਲਾ, ਰੋਜ਼ ਦੇ 150 ਬਣਾਓ, 10 ਦਿਨਾਂ ਚ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਔਰ ਪੀਏ 50-50 ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ 1500 ਕਰ ਲੋਗੇ। बट मैं एवरी डे कहता हूँ अप टू यू गाइस टू ट्रेड। मैं एमबीटी के सिग्नल 2 हफ्ते से सुबह सोचता हूँ कि आज मैं जाके कुछ लो ऑफ द बार ट्राई करूँगा। मैं चाल लगाने लगता हूँ, वो स्पीच बोल देता है, फिर मुझे वापस अपनी स्ट्रैटेजी, क्योंकि पीछे 150 बंदा बेशक मुफ्त में बंदा तो है ना, वो कहते यार आपने सिग्नल नहीं भेजा। मैं कहा यार मैं क्या भेजूं, मैं आपके सामने 9:35 पे वो शुरू हो गया था चाइना के साथ, तो मैं आज फिर प्लान, मैं यार अगर आज मार्केट स्लो हुई, मैं बॉटम ऑफ द बार बेचना शुरू करूंगा। वो मैं सोच ही रहा था, तो वो न्यूज आई 10 बजे, तकरीबन 10:30 जाके जरा स्लो हुआ है, और फिर जी हम बैठ गए आके S1 पे। तो हमें हुई सर 1 मिनट देखना, मैं सिर्फ let me just set up his simulations account, sim number 2, sim 3. Let's do a test run.
All right, time to go. We'll see when the market goes where. कल आपने ट्रू एरिया टू एरिया खेला. ट्रू. I am expecting to show you guys area to area on a real account soon. 100,000 US डॉलर का रियल अकाउंट. और आप देखेंगे कि 1 लाख से 1,000 रोज का कैसे बनता है. नैस्डैक पकड़ लें, एक लॉट मूव होती है $20. ये नहीं कि एवरीडे ट्रेड डालना है. नैस्डैक आप पकड़ लें R3 और $20 का अगर एक पॉइंट हो और मार्केट $1,000 चाहिए ना, तो 50 पॉइंट मूव होनी है. तो 2-3 एरिया से आपने लिए, एक में 200, एक में 300. तो अब मैं आप कहेंगे यार 1 लाख के अकाउंट में तो आप 35 लॉट ले सकते हो. नहीं लेने ना, क्योंकि अगर रात को 5 बजे मार्केट फंस गई और आप -$4,000 पे हो तो आपको होल्ड करना है. और $18,500 चाहिए होता है एक लॉट को होल्ड करने के लिए, प्लस योर लॉस. तो लेट्स से अगर 1 लाख का अकाउंट है रियल का, लोगों के यहाँ पर अंदर जो डैनियल के साथ बैठते हैं 4-4, 5-5 लाख के अकाउंट है. कोई क्रूड ऑयल में बैठा है, कोई नेचुरल गैस में, क्योंकि वो एक दिन के ट्रेड नहीं है ना, वो एरिया टू एरिया खेल रहे हैं. तो उनको पता है कि इस बैंड से एंटर करूंगा तो वो ऊपर तक बैठूंगा, मिड बैंड तक. तो जिस तरह आज उन्होंने कहा 240 से बाहर आ जाए बाय कर ले, 240 से ऊपर चले जाए सेल कर ले, तो वो अंदर 50 पॉइंट. उनको ये नहीं होता कि यार मैंने बैठा हूँ. वो 5-5 दिन एक ट्रेड में बैठेंगे, लेकिन वो निकालेंगे कितने, $20-20 हज़ार डॉलर. लेकिन पावर है ना, मनी. सो 1 लाख के अकाउंट से रियल रोज का 1,000 बनता है. लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग पता हो कि आप एक माइक्रो डालें, 50 पॉइंट रोज लेते जाए नैस्डैक में, $1,000 मशीन की तरह बाहर, लेकिन उसके लिए 1 लाख चाहिए. और 1 लाख कहाँ से बनता है, ये फंडेड अकाउंट से. आपके सीरियसली आप बना सकते हो 1-2 सालों में इतना बड़ा कैपिटल. 2-3 ठीक है, नहीं वो ठीक था, लेकिन कहीं तो रुकना है ना. मैंने R2 से सेल लिया था, मैंने FTMO में सेल डाला हुआ था R2 से. हाँ, और उसने FTMO में मुझे दबा के $1,200, 5 माइक्रो डाले थे सिर्फ, पूरा मिनी भी नहीं था. मैंने 5 छोड़ दिए क्योंकि बैलेंस बहुत बड़ा है ना. FTMO का बैलेंस मेरे पास $10,000 है. तो यार कितनी घूम जाएगी. ट्रम्प है, घूम भी सकती है. मैं देखा है 2,000 भी घूम सकती है. लेकिन मैं जब R2 पे गई तो मैंने FTMO में ना, मैंने कहा भाई फेंक दो. 5 MN की उठाए और उसमें सेल किया. अभी 5 मिनट पहले निकला हूँ. और ये आज आपकी ये देखें, ये जो मैंने शॉर्ट किया ना, ये अभी अब निकला हूँ जाके, कितने से $1,000, $600, ये 2 दिन के हैं. तो ये नैस्डैक की पावर है. ES में उतने नहीं बनते, लेकिन नैस्डैक में जिस तरह आप कल बैठे हो ना, आपने $1,000 बनाया है. फर्क ये है, वो लाइफ ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड खराब करता है, क्योंकि आपने 940 देखे. अच्छा पहले देख ले. अच्छा फिर वापस लाए $11 पॉजिटिव पे. अच्छा, मीनिंग ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋल्ड ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ. ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ फटाफट भज्जा. मैं पैनल से खुल गया. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟੇਟ ਇਸ ਰੋ. हाँ मैं कहा सर ES एंड डॉ ऑलरेडी R2 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਨੇ. नैस्डैक टाइम लगा रही है, तो मैं रवा के ना रवा. सर कहते रहो. हाँ मैं सवेरे उन्होंने कहता ਸੀ, मैं क्या सर मैं शॉर्ट हूँ. कहते हैं शॉर्ट रहे, S2 तक आ सकती है, S1 तक आ गई. ये जो पोजीशन ट्रेडर है ना, उसको ये फियर नहीं होता कि मैंने 5 पॉइंट लेने हैं, 8 लेने देना है. उसने एरिया टू एरिया खेलना है. कल आपने ट्रू एरिया टू एरिया जो है ना, लेकिन ये फंड सिर्फ और सिर्फ एरिया टू एरिया कौन खेल सकता है, पर्डिया वाले. आप एक MNQ छोड़ दें और एक MNQ R3 पे आ जाए ना कभी, तो एक MNQ छोड़ दें और 3,000 का बैलेंस है. अगर तो बैड लक है तो वो भी जाएगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ आपको $100-200 वो गिरते 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 आ जाता है. और अगर S3 पे या S4 पे बैठा है, एक MNQ लॉन्ग किया, वो चढ़ते 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 एंड ऑफ द डे जो है ना. सर गुड कराए है.
इट्स ओके, दीज आर गुड स्टोरीज। नाउ हम खामोशी से बैठेंगे। प्राइस मुझे नजर आनी चाहिए 18,100। क्या है जी एरिया आपका S2? हाँ, ये 350 तक तो आए, 380 तक तो आए। मतलब आपने एक एरिया लग मैंने S2 लूंगा ना, लेस से लॉन्ग करता हूँ, ठीक है, लॉन्ग करूंगा। फिर जब तक वो 100-125 पॉइंट S1 तक, S1 पे मेरा एग्जिट लगा होगा कि S2 से S1, जिस तरह कल इन्होंने किया, इन्होंने R1 से खरीदा और R2 पे जाके निकले ये। लेकिन उसके अंदर ऐसे नहीं था कि वो रेट गई, ऊपर गई 200 प्लस, 300 माइनस, 600 प्लस, 0, 700, 100, 800, 200, 1000, 300, ऐसे एरिया टू एरिया चलता है। ये नहीं होता कि आपने बस क्लिक किया और वो ले जाए ट्रेड। बैठे रहेंगे, बैठे ले। तो ये पोजीशन ट्रेडिंग वाले बैठते हैं जो कर सकते हैं आप। हाँ, थ्रेशोल्ड का मसला ही नहीं है। लेट्स सपोज आपने ट्रेड डाला था मॉर्निंग में लॉन्ग, जिस तरह गई है मार्केट एकदम, और R2 तक चली गई, आप निकल गए और 200-300, अगर आपने 100 भी देखा और 500 भी देखा तो 100 पे बंद किया तो पर्डिया वाले ये नहीं कह रहे यार 400 हमें काटेंगे हम। तो जिस फर्म पे लिखा आ जाता है ना एंड ऑफ डे, मेरी फेवरेट हो जाती है, क्योंकि वो आपको लाइव जहां लिखा आता है ना लाइव ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड, वो पता लगता है यार कि ये काटेंगे पैसे आपसे। तो एनीवे, पर ट्रेड के हिसाब से मनी चार्ज वो कमीशन पर ट्रेड से होता है। लेकिन जो ये वाली कंपनीज है ना 2 स्टेजेस वाली, ये जनरली स्टेज 2 में आपको कैसे पकड़ती हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको फ्री में पैसा नहीं देना चाह रही, वो देखना चाहती हैं कि बंदा ट्रेड कैसे। तो वो ऐसे आपको तंग करती हैं कि आपने एक ट्रेड डाला, आपने लॉन्ग किया मिड बैंड से, 5400 प्राइस थी, वो चढ़ते 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 गई 5410 तक चली गई। अब ये प्राइस है $10 और आपके बने 500, PNL शो कर रहा है, आप एक्साइटेड हो, लॉक नहीं किया या बंद नहीं किया, वो गिरते गिरते आके 5401 पे आ गई, 9 पॉइंट आपके खाए गए, जाया हो गए ना। आपने बंद कर दिया, आपने कहा यार 50 तो ले लूं, उन्होंने आपका लेजर पता कैसे लिखा, 50 डाल दिया टारगेट की तरफ, 450 थ्रेशोल्ड से खा लिए। आपने कहा यार ये क्या नॉनसेंस है। तो वो ये ड्रामा करती हैं सारी कंपनियां। उसका ये तरीका है उसको कॉम्बैट करने का, आप क्या करो, 500 देखा है ना, एटलीस्ट 400 लॉक कर दो, क्योंकि अगर वो गिरे वापस तो 100 का नुकसान हो ना आपका, 500 का तो नुकसान हो। आपको एक हैबिट बनानी है कि यार मैंने प्रॉफिट लॉक करना है, लॉक करना है, करना है, करना है। जिस तरह आप करते हैं, आप 8 टिक्स के बाद मेरे ख्याल से 0 कर ले आते हैं या नीचे ट्रेल करते हैं। तो ट्रेलिंग इज द की। lots of ways to do it. एटीएम बना सकते हैं कि यार मुझे सिर्फ 2 पॉइंट दो, मैं बाहर आ रहा हूं, ये मेरा। अब देखें जो टॉप ऑफ द बार है उसकी एक स्पेसिफिक एटीएम है, 3.5 पॉइंट लॉस या $75 लॉस और 2 पॉइंट प्रॉफिट, डन, राइट। तो आपको अगर 3-4 अच्छे SRES के बाद लो ऑफ द बार मिल गए, आप अपना टारगेट कर लोगे। लेकिन वो वाले SRES ना लें, आई मीन वो वाले लो और टॉप वाला ना लें जो कंफर्मेशन से बगैर ही आते हैं, उसमें भी बन जाते हैं लेकिन थोड़ा रिस्क हो जाता है। लेकिन जो आपको प्रॉपर लोअर लो से बने या जो हायर हाई से बने बॉटम ऑफ द बार, वो प्रिसाइसली आपको 2-2 पॉइंट दे जाता है। और 2 पॉइंट अगर आपने लिए MES में 5 माइक्रो से, तो आपके बने $50 और दूसरे 4 पॉइंट चाहिए $100 के लिए। तो मैं आपको ट्रेड ब्रेक कर सकता हूँ इतने माइन्यूट के $20 कैसे बनाने हैं। 20 बनाने हैं, माजिद भाई से जाएं, उनसे कहें MGC खोल दो मुझे, 4 टिक्स लें और माजिद भाई कहेंगे लो जी मशीन बनाती है, तुसी 20 कटी जाओ। लेकिन हर ट्रेड में 20 का फायदा 100 का नुकसान, 20 का फायदा 100 का नुकसान। तो मैं आज फिर ES बड़ी तेज चली यार। कोई लिया ट्रेड आपने? कौन सा लिया? R2? अच्छा, नहीं, लेकिन केड़ा एरिया लिया सी? अच्छा, आज अच्छा ES
नैस्डैक हुन मैं वेट कर रहे हैं S2 ओ मैं मिस कर गया, ओ न्यूज़ में आया था। ओ न्यूज के अंदर आ गया था वो कल एक पॉइंट। एरिया लेने का मजा आया कल रात को अच्छा गैप से खुली एक्सट्रीम हाई से गिराया मैं तो हर माइक्रो लिए थे मैंने रेशियो लगाई हुई है 1500 का अकाउंट होगा मैं आपको दिखाता हूँ 2 माइक्रो लगे हुए मेरे कुछ अकाउंट बड़े वाले हैं उसमें मैं 5 माइक्रो एक मिनी लगाता हूँ जो 3 लाख का अकाउंट है उसका 7500 थ्रेशोल्ड है जो ट्रेडिफाई वाले हैं उसका थ्रेशोल्ड 3750 है तो मैंने उसमें 5 माइक्रो लगाए तो जब मैं एक क्लिक करता हूँ ना तो वो रेशो चलती रहती है कि यार 1500 वालों में से 2 माइक्रो भेजो 3000 वालों पर डिया में 3 माइक्रो भेजो उसको 5 भेजो और उसको 10 माइक्रो भेजो उसको क्रॉस डाला हुआ है सर 40 मैंने किया 54 और 7 से सेल मारा पहले तो वो गई ना 54 17 तक मैं कहा लो जी लेकिन इतना बड़ा थ्रेशोल्ड है कि वहां से वो गिरी 88 तक मैं जिम में था मैंने वहां क्लोज नहीं कर पाया मैंने देखा यार ये तो पैसे बन गए फिर देखा यार मेरा थ्रेशोल्ड खराब हो गया अब मेरा माइंड ये कहे यार मैं इसको बंद करता हूं तो मुझे 150 का फायदा होता है लेकिन 100 का नुकसान हो रहा है मेरा माइंड इतना मैं अब ट्रेडमिल पे चल रहा था मैं कहा यार बंद ही करो फोन पे क्योंकि वो हुआ ये कि वो 54.7 से गिरी 53.88 तक तो 54.7 माइनस 53.88 ये मुझे मिलने थे 19 पॉइंट अब 19 पॉइंट का मतलब ये है जो 2 माइक्रो लगे हुए टाइम्स 10 $190 जो 5 माइक्रो लगे हुए हैं 19 टाइम्स 25 $475 मैं आया मैंने यार इसमें 150 है इसमें 237 बना हुआ है मैंने किया क्लोज ट्रेडोवेड में लॉग इन किया फिर मैंने कहा ओ माय गॉड ये तो 88 से आ रही है तो लेकिन फिर मैंने कहा यार लेकिन आज वो थ्रेशोल्ड रिकवर कर लिया क्योंकि ये थ्रेशोल्ड के ना अनोइंग प्रॉब्लम है कि आप माइंड आपको ना वो मैसअप कर देता है कि आपको कहते हैं जिस तरह कल आपने कहा मैंने 611 देखा और फिर 11 देखा बर्न हो जाता है तो ये थ्रेशोल्ड के साथ तो थ्रेशोल्ड में बेस्ट ये अपना लिमिट लगाएं कि यार मुझे इतने 5 पॉइंट मिले तो मैं बाहर हो रहा हूँ 3 पॉइंट मिले मैं बाहर हो रहा हूँ नहीं एसएल तो मैंने कहा एवरेज करेंगे देखेंगे क्योंकि एक्सट्रीम हाई पे खड़ी थी और वहां अगर मैंने होल्ड कर ली होती ना सिर्फ ये देखें अभी वही रात ही चल रही है ना सर 250 पॉइंट नहीं 54 कल किधर गई थी 54 79 नहीं 5500 से नीचे आई है 5387 113 पॉइंट इट्स ओके मैन डोंट वरी I care about my $50 per account. That's it. हाँ लेकिन मैं आपको बताऊं मैं बैच करता हूँ मैं बैच ये क्या हुआ जी कोई इसने कह दिया होगा भाई साहब ने वो पहले अपने फ्रेंड को कहना बाय कर लो नहीं सर कितना कनेक्शन कितना कनेक्ट कर सकते नहीं देखो कॉपियर है ना फ्लोबॉट ठीक है एपेक्स भी कॉपियर चलता है नो प्रॉब्लम तो आप अपना लीडर जितने मर्जी विंडो खोल लें तो मैंने ग्रुप्स डाले हुए हैं टेक प्रॉफिट का ग्रुप एपेक्स का ग्रुप पर्डिया का ग्रुप जी हाँ ਤੁਸੀਂ मल्टीपल विंडो खोलना ना कॉपियर दी हाँ जी सर हाँ शॉर्ट में एकदम से शूट हुआ है प्रॉफिट कुछ ज्यादा हो गया तो अच्छी बात है ये कोई मार्केट में तबाही आई है लगता है नहीं एक लिमिट थी ना आपने बोला था ये है पीए है ये कौन सी कंपनी है लेजेंड तो कितने बनाए हैं 1500 उनके साथ बैठे हैं लूज करें क्योंकि हाँ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੂਜ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਵੱਜ ਗਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ अगर लूज ना आपने किए नैस्डैक खेलते हैं वाह डिवाइडेड बाय 30% अब आपका टारगेट 5 पे चला जाना है अगर लूज ना किया हाँ हाँ लेकिन इनको प्लीज ईएस पे लूज करवा दें नैस्डैक पे किए थे ये 1500 ना वापस चले जाने फौरन देखो मैं कॉपियर खोलिया फिर नवा जाके न्यू कॉपियर
फिर नवा जाके न्यू कॉपियर। मैं कॉपियर दिया ना 5 टैबां खोलियां हुई, बल्कि इधर आओ मैं तुम दिखा देना अपना खोल। सर मल्टीपल कनेक्शन ਆਪਾਂ ਇੱਕ हाँ चलो हाँ इधर देखो ए मेरा ਹੁਣ खुल रहा है। सो आई विल शो यू कि मेरी 50 ऑफ कोर्स 50 अकाउंट मैंने कैसे चलाता हूँ। आप कहें यार 50 चला लेता, पता कैसे चलाता कैसे यार 10 में ਇੱਧਰ ये अभी मेरे म्यूट कर दो, पता लगता है काफी अकाउंट छोड़। आ जाए देख लें, नो प्रॉब्लम। आई जस्ट शो यू व्हाट माय सेटअप लुक्स लाइक। सो आई हैव डन इसमें HTML पता नहीं लगा तो मैं सिर्फ आपको अपना ये मेरा वैसे सेटअप होता है। मेरे पास ये देखिए जी, सॉरी ये मेरा 1510 खुला हुआ है, ठीक है। इसमें मैं क्या देख रहा हूँ, MES। देखिए मेरे पास ES कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। ये मेरा 3020 MES खुला हुआ है, ठीक है। ये मेरा 60 मिनट का MES खुला हुआ है और ये मेरा 240 का MES एरिया के लिए खुला है। नीचे देखें, अगर ना मैं नैस्डैक कहाँ देखता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये MNQ का 60 मिनट का चार्ट। ये मैंने 2-3 चार्ट गोल्ड वगैरह खोले। अब ये कनेक्शन देखें, आप कनेक्ट करना शुरू करता हूँ माई एपेक्स, ठीक है। अब एपेक्स कनेक्ट हो जाएंगे, फिर मैं कनेक्ट करूँगा बुलनॉक्स, जितने मर्जी कनेक्ट कर दें, ठीक है। ये बुलनॉक्स आ गया, साथ में पर्डिया कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। सारे एक्टिव अकाउंट्स हैं, ठीक है। साथ में पर्डिया 2 कनेक्ट कर दूंगा, साथ में मैं टेक प्रॉफिट कनेक्ट कर दूंगा, साथ में मैं ट्रेडिफाई कनेक्ट, क्योंकि मुझे तो अपॉर्चुनिटी एक दफ़ा ही मिल रही है ना सारे ट्रेडों में। अब ये मेरे 50 अकाउंट कनेक्ट हो गए, ठीक है। अब मेरे कॉपियर देखिए, अच्छा ये मेरा डॉम मैंने खोला हुआ है, क्योंकि मैं ट्रेड इस तरह डॉम में करता हूँ। ये मेरा कॉपियर खुला हुआ है फ्लोबॉट, ये देखिए मैंने ES खोला हुआ है, ठीक है। अगर आप ES को देखेंगे तो ES के ये मेरे लगे हुए हैं, ये मेरा लीडर है, ये मेरे फॉलोअर्स हैं। मैंने कहा ट्रेडिफाई को ES करें, ठीक है। फिर मैंने एक और खोला हुआ है 3 लाख के एपेक्स अकाउंट को 20 अकाउंटों को ES दिया हुआ है। अब ये MES मैंने कहा है टेक प्रॉफिट है, ये है नहीं, ये एपेक्स के छोटे अकाउंट है, उसको मैंने MES को उसको कहा हुआ कि मैं एक डालूं तो एक, तो ये इसको बैच बनाया हुआ है। ये MES बना है बुलनॉक्स का, ठीक है। बुलनॉक्स के ये बैच बना है MES का, इसका लीडर होगा ये वाला। तो हर एक लीडर नहीं देखो मैं एक लीडर नहीं लेंदा, मैं उस ग्रुप का लीडर लेना। हाँ देखो पर्डिया दे कोल मेरे सिर्फ 2 अकाउंट है, तो मैं एक लीडर एक फॉलोअर, ठीक है। हाँ आप सिर्फ मल्टीपल टैब्स खोलते रहे ना। देखें ये जितने मेरे देखिए कितने फंडेड अकाउंट हैं, 1 2 3 4 5 6 फंडेड अकाउंट हैं और 70 अकाउंट है। लेकिन इसमें ये नहीं होगा कि मैंने एक क्लिक किया और 70 ट्रेड हो जाएगा। मैं देख रहा हूं कि अच्छा पर्डिया को मैंने चलाना है ना, मुझे पर्डिया को खिलाना है, तो मैं पर्डिया का एक लीडर है, पर्डिया के फॉलोअर है। अब टेक प्रॉफिट है, टेक प्रॉफिट का एक लीडर है, टेक प्रॉफिट के 4 फॉलोअर, कनेक्टेड सारे हैं, लेकिन मैं एक बैच को इकट्ठे चलाता हूँ। एक बैच मतलब एक ऑर्डर 70 ऑर्डर कवर होने जितने सारे बैच बने जितना बैच बना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हाँ चलो मैं लीडर कर लूंगा। अब मेरे ऐसे ये तो आपके बन गए ना कॉपियर, ठीक है। अब मेरा डॉम देखें, मेरा डॉम इस तरह सेट होता है कि मैंने अब ट्रेड डालना है ना, तो आप कहेंगे यार मैं ये देखिए मेरे सुपर डॉम कैसे बने हुए हैं मेरे। हाँ वो सब ATM के थ्रू है और तो ट्रेल करना तो मुश्किल है। मैं तो MES करता हूँ ना, नहीं थोड़ा सा तो ब्रीदिंग रूम। अब देखिए अब मैंने यहाँ पर 5 टैबें खोली हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 टैब। हर एक डॉम की उसकी ग्रुप का लीडर खड़ा है। ये देखिए इसका लीडर ये है, इसका लीडर ये है, इसका लीडर। जब मुझे प्राइस आई मैं यहाँ से सेल बिड आस्क बिड दबा दूंगा और वो लीडर अपना फॉलोअर के साथ, क्योंकि कई दफा ये होता है जो कॉपियर है ना वो एक लीडर और 70 फॉलोअर नहीं हो सकते, वो मैक्सिमम 6 7 8 फॉलोअर नहीं, तो इसलिए मैंने उसको बैचेस में तोड़ा हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ टेक प्रॉफिट 5 अलाउ करता है ना, एक लीडर है 4 फॉलोअर है, एपेक्स अलाउ करता है 20, एक लीडर है 19 फॉलोअर है। सेम ग्रुप का ही होगा, सेम ग्रुप को मैं ग्रुप को कर रहा हूँ। I was thinking कि you can choose Apex। नहीं वो ठीक है, अगर आपके अकाउंट 20-22 हैं फिर ठीक है, लेकिन यार हाँ वो कोई मसला नहीं है। आप ये रखें 5 एपेक्स हो गए, 2 टेक प्रॉफिट हो गए, 2 बुलनॉक, फिर ठीक है। 20 से कॉपियर आराम से हैंडल कर लेता है।
लेकिन आप एक ये नहीं कर सकते, एक डाला और 70 अकाउंट कॉपी हो जाए, वो फिर क्रैश हो जाता है। कॉपी होने से भी माइनस हो हाँ हाँ, होता ये कि मैं कई दफा एपेक्स में ट्रेड डाला है, उसने एपेक्स को तो बंद कर दिया, टेक प्रॉफिट को बंद नहीं किया, वो माइनस में हो गया। तो मैंने हर एक को बैच में तोड़ा हुआ है भाई, एपेक्स मैंने सेपरेट करना है एक ग्रुप दे विच मैक्सिमम 20 कॉपी रखो, एक 20 अकाउंट्स तो ज्यादा ना पाओ यार, क्योंकि मैंने काफी दिक्कत आई, कई रिदमिक ते उल्टा करता है, लॉन्ग करके ट्रेड क्लोज होके वो अपोजिट ट्रेड खोल देता है। मैं क्या यार अजीब ना, तो ये मेरा सिंपल सा, मैं ऐसे जब आपको वो लिस्ट आती है ना कि मैंने 150 बने, चलें अब मैं नजर लगवाने लगा अपने ट्रेडों को। ये देखें इसका ना, ये देखें, नहीं ये देखो सर, नहीं देखें, ये सारे अकाउंट आज के हैं, ये देखें ना, ये 70 अकाउंट ट्रेड हुआ है आज, ठीक है, ऐसे पैसे बनते हैं। नहीं देखें, अब देखें 70 अकाउंट है, कोई पूरा थ्रेशोल्ड है, पूरा सब कुछ। अगर सबसे बड़ा अकाउंट कितने का है, मुझे लगा जो एपेक्स का सबसे बड़ा अकाउंट मुझे आए $1540, क्योंकि फुल मिनी लगाया था, राइट, वहां फुल मिनी आ गया। ये देखें यहाँ पर हाफ था, ठीक है, उसने 1500 के 442 बनाए, पर्डिया में 328 बन गए, एपेक्स के छोटे अकाउंट में 280 बन गए, टेक प्रॉफिट में 150 रखे, क्योंकि यार सिर्फ 2 माइक्रो रखे हुए, और बुलनॉक्स के पीए में 2 माइक्रो रखे हुए। तो आप $100 लो और 70 अकाउंट कर दो तो 7000 बनता है। लाइक दिस इज ओवर स्लो। ओह नहीं, द गेम इट्स अ बिट ऑफ ए मच इजियर टू। देखिए मैं इसकी ना वीडियो एक बना देता हूँ आपको, ताकि आप सारों को इजी के लीडर कॉपियर की सेटअप क्या है ना, सब स्मॉल है, मेरे पास कोई मिनी नहीं है। देखें मेरा एपेक्स का जो 3 लाख का अकाउंट है, राइट, उसमें मैंने, देखें ये लीडर है ना, तो इसमें मैंने ईएस डाला हुआ है, ये इधर देखें ईएस। मैं अगर आपको अपनी ये दिखा दूं कि ये मेरा डॉम है ना, किधर गया मेरा सुपर डॉम, ये सुपर डॉम मेरा बना हुआ है। अब मैं इसमें ट्रेड इस तरह करता हूं, क्योंकि मैं चार्ट ट्रेडर में चेंज नहीं कर सकता, जगह ज्यादा है ना। ये देखें इसका लीडर है ईएस, सॉरी, तो मैंने अपने बैचेस बनाए हुए हैं, एपेक्स का बैच अलग है, टेक प्रॉफिट का अलग है, किधर गया, सॉरी, ये देखें फॉर एग्जांपल टेक प्रॉफिट है, ठीक है, मेरे पास 25,000 वाले हैं, पीएस हैं, तो इसका लीडर ये होगा, इसका फॉलोअर कॉपियर के अंदर पड़ा है। तो मैंने 5 कितनी टैब्स खोली हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टैब्स खुली हुई है मेरे कॉपियर की, और 7 एक डॉम एक ही है, टैब्स खोली हुई है ना मैंने, ताकि इसका लीडर और है। तो अच्छा, ये अगेन नॉट ए रिकमेंडेशन फॉर फर्स्ट टाइमर, दिस कुड लाइक यू नो इट्स अ, हाँ एग्जैक्टली। तो आप जितनी मर्जी टैब्स खोल लें, जितने मर्जी लीडर सेट कर लें, जितने मर्जी फॉलोअर सेट कर लें। तो ये इसमें आपने देखिए अब मैं कॉपियर के आपको सिनेरियो बताता हूँ। देखें ये कॉपियर है, ठीक है ना, कॉपियर ये है ना, देखिए मैंने इसको कहा हुआ है, ये ट्रेडिफाई है ना, ट्रेडिफाई में मैंने पूरा लॉट लेना है, समझ आ गई। मैंने क्योंकि उसमें मेरे पास बैलेंस बड़ा है, मैं जब करूंगा एपेक्स का 3 लाख का अकाउंट तो मुझे पूरा करना है, मैंने उसमें माइक्रो नहीं खेलना, राइट, लेकिन उसमें फुल लॉट ली, ईएस को लीडर रखा हुआ है ना। अच्छा, लेकिन मैं आ गया एपेक्स के छोटे अकाउंटों पे जो 50,000 वाले हैं, उसमें मैं उसको माइक्रो कर रहा हूँ। अच्छा, माइक्रो कर रही, आपकी कितनी एमईएस, आपकी क्वांटिटी कितनी है? मैक्सिमम 3 क्वांटिटी, 3 एमएनक्यू, 3 एमईएस, दैट्स इट। 3 एमएनक्यू, अच्छा, मैं ज्यादा एमएनक्यू नैस्डैक नहीं एमईएस करता हूँ। होगा ये कि जब ये किसी एरिया पे आएगी ना, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से इसका इंस्ट्रूमेंट बदलना है लीडर का, और अपने डॉम का लीडर का इंस्ट्रूमेंट बदलना है और एमएनक्यू पे ले जाना है। होगा ये कि जब जैसे ही प्राइस 19,450 पे आएगी, मैंने अपना लीडर एमएनक्यू करना है, मैंने अपना फॉलोअर एमएनक्यू करना है, दैट्स इट। और फिर सारे वो आपका सारे हो जाए तो, लेकिन मैं एक ग्रुप बैच ये नहीं कर रहा कि मैंने एक लीडर के अंदर 70 फॉलोअर रखा हुआ। तो दिस इज हाउ यू मैनेज हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट, इट्स नॉट ए लाइक, अभी तो मैं इसमें 5 डाल सकता हूँ, अभी लेजेंड नहीं मैंने कनेक्ट किया, 10 लेजेंड के आ जाते हैं,
तो 70-80 आपके पास सर कितने अकाउंट्स हैं? 82 अकाउंट 82 अकाउंट्स हैं कंबाइंड, कंबाइंड हर एक के। और एक एक वक्त में आप 10 या 20 नहीं मैक्सिमम 20 को जोड़ता हूँ 20 को तो उस बैच को, क्योंकि 82 बच्चे हों हर को तो हर वक्त तो नहीं ना खिलाना, थोड़ा सा इसको डाल दिया, थोड़ा MES और ज्यादातर ठीक है। मैक्सिमम आप MNQ MES ही करते हैं आप ना? ये देखिए मैंने आपको अपना लाइव सेटअप दे दिया है। मैंने अगर 25,000 का अकाउंट है, जो 15 PAs हैं, ये PAs हैं, तो उसके अंदर अगर तो 7600 का थ्रेशोल्ड है 3 लाख वाला, फिर मैं एक मिनी डालूंगा, क्योंकि वरना तो गया हो गया जी। यूज करने पै रहे हैं, हाँ पॉजिटिव आ रहे हैं, हो गया ठीक है। कितना किया है और नीचे करें? हाँ जी हाँ जी फिर ठीक है। नहीं 600 है सर, 3000 बनाना है ना, 3000 का 30% 900 ठीक है। 874 डन हो गया। श्योर अच्छा हाँ ए देखो ए ब्लैक बैंड है ना, ए थल्ले बैंड चल रहा है 60 मिनट ठीक है। 60 मिनट ਦਾ ਅਪਰ ਬੈਂਡ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਐਸ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਨਾ 5327 ਲੋਅਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਕਰ ਦਿਓ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ ਰਾਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਨਾ ਬੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ 60 ਜਾਂ 240 ਤੇ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁੱਡ ਸੈਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਬਾਇੰਗ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਈ ਕਰੂੰਗਾ S2 ਤੋਂ? 240 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਿਡਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ये तो बाइंग नहीं बढ़ती जब। हाँ देखिए जो ये उन लोगों के लिए जिन्होंने ट्रेड को लंबा छोड़ना है, ये नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ये FTMO की ऐप है ठीक है, ये ऐप है, ये भी एक चैलेंज है। इसमें मैंने 30,000 बनाना है, फिर वो मुझे पैसे देंगे ठीक है। इसको हम ये माइक्रो मिनी से नहीं कर सकते, तो इसको आपको एक ट्रेड को जब तक $1000 ना बने हम ट्रेड के अंदर बैठे रहते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जब इस बैंड से प्राइस बाहर आ गई तो आपने बाय कर लेना नीचे। ये ब्लैक बैंड है ना, और ये ऊपर ब्लैक बैंड चल रहा है, तो इसकी PDF बनी हुई है। तो 60 मिनट के ऊपर और 60 मिनट के नीचे या 240 के ऊपर और नीचे प्राइस आ जाए तो आप पोजीशन ट्रेडिंग वाला ऑन हो जाता है। अब मैं किसका वेट करूं? हाँ FTMO मैं ये पिवट पे आ गई ना, 18,480 पे आ गया ना, तो मैंने यहाँ से बाय कर लिया ठीक है। अपर बैंड में टच ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੈਲ ਕਰ ਦੋ। पोजीशन ट्रेडिंग है तो लॉन्ग टर्म ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਕਣੇ के अकाउंट। हाँ देखें ये ऊपर बैंड पे है ना, यहाँ पर आपने सेल में रहना है। ये बैंड से बाहर चली गई ना, यहाँ से आपने बाय में रहना है। तो ये आपको एक लॉन्ग टर्म बता देता है कि मैंने शॉर्ट नहीं जाना। देखिए एक शॉर्ट हो रहा है 15-10 में, आपने लिया शॉर्ट किया लिया, वो स्कैल्पिंग हो रही है 5-5 10-10 पॉइंट। ये देखें ये मूव पता कितनी है? 1400 पॉइंट की। ये मूव कितनी है? 2000 पॉइंट की। और वेट किया ना, या तो चले यहाँ पर भी निकल गए। देखिए हाँ पा देता है ना, नहीं मैं मिड बैंड से निकल जाना, क्योंकि मिड बैंड तो टच करके वापस आ सकती है ना। एग्जैक्टली तो पोजीशन ट्रेडर की करता है बैंड टू बैंड खेलता है, या 60 मिनट खेलेगा या 240। लेकिन उसके लिए अब जो स्टॉक, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मुझे किसी ने फोन किया यार एनविडिया बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, मुझे तो नहीं पता। मैंने इसमें एनविडिया डाला, मैंने कहा यार एनविडिया खरीद लो, बैंड से बाहर है, 1440 के बैंड से बाहर है, 240 से बाहर है, 60 से बाहर। उसने खरीदा एनविडिया, वो शूट कर गया, पैसे बना लिए। जब वो ये मार्केट गिरी थी, कितनी गिर गई थी, एनविडिया 89 पे आ गया था, अमेज़न। अब जब टेस्ला था 485, वो 1440 के बैंड से भी बाहर था। हमने कहा भाई ना बाय करना टेस्ला, ये बहुत ओवर। इधर से देख लेते हैं हम कि एक स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, यहाँ से। अच्छा नहीं ये फिब्स आपके, ये फिब्स हाँ जी
So right now ये कह रहे हैं कि sell the trade करना। सेल नहीं, अभी बाय है। बैकग्राउंड कलर बुलिश है तो 240 कह रहा है कि बाय करो, लेकिन हमने कहां से गुड वैल्यू बननी है? 18,475 से गुड बाय बनता है। क्योंकि ਉੱਥੇ mid band ओथे मिड बैठ रूल्स वही है, छोट हाँ, और सारा कुछ उधर खड़ा है। ये मल्टी और फिबोनाची की रिट्रेसमेंट भी वहां तक थी, वो यहाँ हो गई है, वापस आ रहे हैं। तो क्या ये शायद 2 दिन में आए, 3 दिन में 18,475 हमारा बाय एग्जैक्ट। हाँ जी कनेक्ट नहीं हो रहे एपेक्स एंड नहीं सर, देखो बुलनॉक्स रिदमिक है, एपेक्स रिदमिक है। ओ देखो इस वास्ते मैं ट्रेडोवेट बाय करदा है, सिर्फ एक बुलनॉक्स है ਜਿਹੜਾ रिदमिक है। एपेक्स में लेना ट्रेडोवेट, बुलनॉक्स लेना रिदमिक, पर्डिया ट्रेडोवेट है। ट्रेडोवेट जिन्ने मर्जी कर लो, लेकिन नॉट रिदमिक सिर्फ एक। नहीं नहीं या नहीं नहीं एपेक्स हो जाएगा, लेकिन अगर ट्रेडोवेट हो। हाँ जी हाँ जी देखो कुछ लोग की करनगे, इत्थों जदों आएगी ना, इत्थे फिबोनाची बॉक्स बन जाएंगे। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਬਾਕਸਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਬਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਬਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਫਿਬੋਨਾਚੀ ਰਿਟਰੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਥੱਲੇ ਬਣਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੈਲ ਕਰੂੰਗਾ ਉੱਪਰ, नहीं लेकिन हो चुका है, वो आ गई है। हाँ नेक्स्ट टाइम हूँ मैं बाय की करूँगा 18,450 18,500 ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਕਿਹੜੀ ਗਈ ਏਰੀਆ? ਮਾਰਨਿੰਗ ਡੇਲੀ ਨੈਸਡੈਕ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ 18,500 ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ S1। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ S2 ਤੇ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਵਟਸ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ 60 ਮਿੰਟ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। S2 ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, S2 ਤੇ ਬਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ 20-30 ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਹੋ जाने ना। बिल्कुल सर मैं शाम को नहीं कर सकता ना, 6 के बाद अगला दिन है, करें बेशक 6 के बाद अगला दिन, फिर कल 5 बजे तक आपका दिन बनेगा। S2 में अगर बैठे रहे अगर आप नंबर देखते रहे, ट्रेडोवेट तो मेरे हर वक्त ही चल रहा। हाँ जी हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਅਰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ जीमेल ਦੇ ਉੱਤੇ, नो प्रॉब्लम सर सेम। ये क़यामत तक मैं ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ, मैं क़यामत तक ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। सनी एटलीस्ट लेकिन वो तो गैम्बल होया, उन्हें पैसे उन्हें तो बस शॉर्ट सीगा, वो मार्केट गिर गई। एटलीस्ट 3 माह हो गया, क्योंकि देखो जेड़े नैस्डैक चले जाते हैं ना, वो फिर उस ब्लैक होल तो वापस नहीं आते, क्योंकि नैस्डैक तो बाद में ES इन्नी स्लो लगती है, क्योंकि कुछ लोग ने उस तो भी स्लो गोल्ड चल जाते हैं। वो कहते यार गोल्ड मेरे वास्ते ठीक है, वो मैं नैस्डैक करूंगा तो सिर्फ एरिया तो, उस तो बाद यार क्योंकि हुंदा है कि इत्थों तुसी एंटर कीता, उन्हें या लॉन्ग है या शॉर्ट कीता। नैस्डैक अगर एरिया नहीं है तो आपको तो है सर वहाँ पर ये है कि उधर उनको जाने का हमें $US भेजो, तो लगे हुए हैं। देखिए गोल्ड पे वो कहते हैं मुझे $20 डेली चाहिए गोल्ड पे, और दैट्स whatever makes them happy, whatever makes them sleep at night. नहीं S2 की प्राइस वहां से नहीं लेनी, आपने लेना है जो एरियाज की बॉक्स बना हुआ है ना S2 का, आपके एरियाज। हाँ मैं एरिया ये देखिए ना S2, बिल्कुल आपने कहाँ से S2 पढ़ेंगे? बिल्कुल रॉन्ग है, सुपर एरियाज में जाएं। सुपर एरिया अच्छा भी मेरा भी ऑन, हाँ वो ऑन होगा, वहां पर ये नंबर नहीं पढ़ते हम। हाँ जी बिल्कुल ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟ੍ਰੇਡ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕਰੰਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਲੈਟ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨਸਲ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।
सबसे कितना गोल्ड है ये? क्या चीज? कितना गोल्ड है ये? तो -150 गया, मैंने हार्ट अटैक होने लगा है। अगर हार्ट अटैक 150 पे आ रहा है ना, फिर आप ट्रेडिंग ना करें, प्लीज ना करें। दिस इज गोइंग टू बी इस तरह, ये फिर आपके लिए नहीं बने। हेलो सर, क्या हाल चाल है? हुकम भाई सर। मैं अकाउंट पास किया था केड़ा टेक प्रॉफिट? हाँ जी वो ईमेल आएगी ਤੁਹਾਨੂੰ? थैंक यू। ईमेल है नहीं आंदी देखिए किन्ने दिन हो गए पहले दसो? नहीं कल की तक किन्ने दिनां च 5 दिन लॉग इन करो? लॉस नहीं देखते ना, मैं नहीं नहीं देखो, अगेन आइए तुसी अपनी एंट्रीज परफेक्ट कर रहे हो, राइट? आइए, दिस इज नॉर्मल। प्लस 80 पे मैं क्लोज की। ठीक है। बट ग्रुप इज स्ट्रांग हार्टेड। जाओ जी सर, देखो तुसी रोज आके ट्रेड करा दिया करो, फिर एक दिन इतने भाई साहब बैठे ने, मैं इनको बड़ी ना दिक्कत हो रही थी, इनकी लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ। एक दिन एक हमारे भाई आए, उन्होंने इनका अकाउंट पकड़ा, एक ही दिन में 6000 बना दिए। अब ये बड़े खुश थे कि मुझे ना कोई बंदा मिल गया ट्रेड करने। उस दिन के बाद वो नहीं आए, वाहे नहीं। इनको मैंने कहा आपको खुद सीखना पड़ेगा, और जब तक आपको खुद एंट्री नहीं आएगी ना, आप रिलाई कितनी देर करेंगे? देखें, शैडो करने में कोई मजा नहीं। फिर इनको एक ट्रेड पक्का करवा दिया, यार बॉटम ऑफ द बार खेलते जाएं। वो अब ना ट्रैक पे आ गए, तो क्योंकि वो जिस दिन हम लोग बड़े खुश थे कि ठीक है जी आपका 6000 बना है, लेकिन सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि होगा ये, एक दिन कोई शादी है, कोई ब्याह है, वो कहेगा यार मुझे सीखना है, मैंने इस ऑफिस में किया है, एक तो ये कुर्सियां इतनी सख्त हैं, आपकी हिम्मत है, आप लोग यहाँ 8-8 घंटे बैठते हो। मैं तो कहने का आइडिया ये, आप आए यहाँ सीखें, करें, पूरी दुनिया में कहीं बैठ के ट्रेड डाल दें। ये आपके लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, बैचेस आते हैं हर महीने के 30-14 यहाँ बैच निकलता है ना। तो अगर हम यहाँ रखने लगे ना, तो 12,000 बंदा खड़ा हो जाए। लेकिन कहाँ से कनेक्टेड है? ऑडियो सुन रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं। एक दफा आपको फाउंडेशन आ गई कि SRES क्या बनता है। आप गोल्ड में देखें, SRES के बाद चार्ट टेक्स निकलने शुरू हो रहे हैं, लो ऑफ द बार आ गया, एरिया आ गया, 14 में से ये 4 पे ही पकड़ लेना। अच्छा तुसी भाई कितना पास किया ताकि सारे इंस्पिरेशन लें? लेकिन केड़ा इंस्ट्रूमेंट? नैस्डैक नहीं, MNQ। अच्छा थोड़ा थले आ गया। नहीं नैस्डैक ही है, छोटी वाली कर रहे हो, MNQ कर रहे हो, NQ छाड़ देते। अच्छा एरिया तो कर रहे हो, ठीक है। बड़ा हौसला चाहिए यार, क्योंकि नैस्डैक जितना घूमती है ना। अब ये MNQ करते हैं जी, टेक प्रॉफिट 5 दिनों में पास कर लिए, 15 हैं 2 पास, चलो पास तो कर ले ना, लेकिन क्या ना टच वुड नॉक। ठीक है सर, हो गया पास। ठीक है, मैं माइनस कीते जान के नहीं सर ए तुसी कल करने दे। हाँ ठीक है ए ला हो गया। ए कदों पास होया? आज। अच्छा टेक प्रॉफिट दे लॉग इन करो। सब तो स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन फंड जी गई है, हमेशा आने टाइम लिए जाते हैं, मैं भी मिस कर देनी, बट एक रूट फंड जी इज रेगुलर। देखिए सिखाने से अगला सीखता है ना, आप इनको वो ट्रिक बता देंगे बॉटम ऑफ द वर्थ। नहीं देखिए आप पे भी इन्फोर्स हो जाएगा ना कि यहाँ से मैं ट्रेड डालता हूँ। हाँ जी 30-20 पकड़ा हुआ है, बॉटम ऑफ द बार ग्रीन होता है, बॉटम से 2 पॉइंट लेके टॉप होता है। तो एक टिक तो अलाउड ही नहीं है, सारी कंपनी ने कहना मिनिमम 4 टिक्स है प्रॉफिट। ये पास करने के बाद फिर इधर 3000 बना के देना। हाँ हुण देखो मेरी गल सुनो, ये पास हो गया ना, हुण तुसी बनाने सिर्फ 2000, भावें एक दिन च कर लो, भावें 5 दिन च कर लो। मेरी गल सुनो, ਇਹਦੇ ਚ ਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ। 50 200 100 ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ 2000 ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਦੇਣਾ ਬਸ, 5 ਮਿੰਟ। ਉਹ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ टेक प्रॉफिट पास कर लिया। याद है पहले दिन 10,000 एपेक्स। अच्छा जी देखिए सर, अभी क्लिक करते केड़ा पास होया? 204 वाला 44 ऊपर वाला। हेलो ठीक है बाबा जी, एक दिन रहता है, एक दिन रहता है।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ $1 ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਵੇ ਇਨ ਐਂਡ ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਚ ਕੀਤੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਈਮੇਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਕਰਾ ਦੇਗੀ 5 ਮਿੰਟ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਏ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 30 ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪੀਏ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ ਨਾ। इनका टारगेट था 3000, इन्होंने टेक प्रॉफिट लिया था 100, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 150 ਨਹੀਂ 119 ਦਾ 12 ਸੀ 50000 ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ 50000 105 ਨਹੀਂ 105 ਛੋਟਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, 115 ਹੋਣੇ। 115 ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਏ ਦੀ ਫੀਸ नहीं है, डन हो गया। ऑफर की लिमिट है कि नहीं वो अभी तो चला रहे हैं ये वो, लेकिन उनकी कंडीशन ये है कि 30 दिन में अकाउंट फेल ना हो और बस टच, और 30 दिन से आगे ना जाए। तो ये अब इनको कल जो ईमेल आएगी उसमें लिखा होगा कंग्रेचुलेशन, पीए की फीस नहीं है, आप पीए में चले गए। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ एपेक्स तक करते सो ਉਂਝ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ सब कुछ सेम है, ਤੁਸੀਂ साइन करोगे एग्रीमेंट्स ਵਿੱਚ आएगा अकाउंट, लेकिन स्लो जाना यार, मैं ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਲੋਕ ਸਲੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ 200 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, 10 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰੋ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬਣਾ ਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਛੱਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਏਪੈਕਸ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ 10000 ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2000 ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਬਣਾਓ ਜਾਂ 1000 ਬਣਾਓ, ਔਰ ਸ਼ਾਮੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਸੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਜੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਲੈਜੈਂਡ ਡਬਲ ਸਟੇजेस ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਮਾਸਟਰ ਕੋਡ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਖੁਦ ਹੀ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਾਸਟਰ ਫੇਲ ਕਰੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੈਨਸਲ ਖੁਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਟੱਚ ਵੁੱਡ ਪੀਏ ਨੂੰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਭਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਏਪੈਕਸ 10000 ਕੱਲ ਈਮੇਲ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ। ਓਕੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਈਮੇਲ ਆ ਗਈ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੀ ਡੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਜੈਂਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੇਮ ਇਹਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੇਮ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਈਮੇਲ ਆਏਗੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਵਜੇ ਦਿਨ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਈਮੇਲ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। All right guys, I think it's time to go. All right sir, see you. Take care. ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਔਨ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਪੀਰ ਕੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੌਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਖੋਲੋ ਦੱਸੋ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ।